हॅलो. हां. हां, बोल ना. एक काम कर, तू मला व्हॉट्सअपमध्ये हाय पाठव, तुला हो मला. बट बरं डिले कुठे आहे सांगू की इथे डिले दिसत नाही तर. म्यूट करतो.
Admin do. Hello students, within a few minutes we are going to start our inauguration function of PLC and SCADA. Hello. Yes sir. Hello. Yes sir. Yes. आवाज येतोय सर. येतो. ओके. हो हो. शिवगुले सर. Yes, sir. I'm here. Hello. Yes, sir. Hello, sir. Hello.
हा सर, एक थोडा वेळ वाट बघू आपण. पार्टिसिपेंट जॉईन होऊ लागलेले किती जरा युट्यूबवर. आता नियर अबाउट 100 आहे सर, आणखीन थोडे होतील. हा नियर अबाउट 100च्या वर चाललेले सर. बर त्यांना बर बर हे लाईव्ह लिंक आत्ताच द्यावी लागली आपल्याला, कारण बरोबर. हा सर. ठीक आहे, काय प्रॉब्लेम नाही. तुम्ही हे करा, मला सांगा हा सर. हा सर. आता कोण कोण असणार आहे तर. सर व्यास सर, मी, तुम्ही, वर्ल्ड ऑफ ऑटोमेशनचे डायरेक्टर ओझा मॅडम, आणि रिसोर्स काय मॅडम? पर्सन लीना मॅडम, हा अँड हा सेकंड रिसोर्स पर्सन दिनेश धुमाळ सर. हा दिनेश धुमाळ सर. धुमाळ. धुमाळ. येस सर. आणि लीना IST कडनं तैवाल मॅडम. हा अरे IST कडनं डायरेक्टर जे आहेत ते ओझा मॅडम आहेत. नाही नाही IST. IST चे नाही हॅलो, आहेत सर याच्यामध्ये. हा सर. IST कॉल करायला पाहिजे होते. हा सर. तर कॉल करा तुम्ही इथे. येस सर. अरे हा सर, रजिस्ट्रेशन किती झालंय? हॅलो सर आता 470 अबाव आहे सर. रजिस्ट्रेशन. हो सर. येस सर. येस सर. आणि आता आहे जॉईन किती आहेत? हॅलो सर, आता ही जे डबल एक एक मुलांनी सर 5 ते 7 वेळा म्हणजे रजिस्ट्रेशन केलेलं आहे. देन त्याच्यानंतर आता मी काय केलंय, जे नवीन नवीन येतात तेही मी ऍड करतच चाललंय. बट पहिल्या जे कॅन्डिडेट्सनी एक इन्क्वायरी 10 वेळा आलेली आहे, एक तरी इन्क्वायरी असं. सर व्यास सर, लीना मैडम ट्राई होता है पर ऐड नहीं होता है. मैडम आपने रिक्वेस्ट डाला क्या? मॅडम आता करायला सांगा बघू एकदा. अब वापस डालो मैम, अब वापस करो. सर देख रहे. yes. व्यास सर, व्यास सर, व्यास सर. हा मॅडम, एक हा सर, एकच मिनिट. हा सर, हा आम्हाला बोला फक्त मॅडम.
हा सर, ऍक्च्युली अलाव करा ना सर, होत नाहीये. दिनेश सर पण अलाव नाही केला अजून तुम्ही दिनेश सरांना, आणि लीना मॅडमला पण ऍड नाही केलं. नाही, मला इथं त्यांचं हे दिसत नाहीये मॅडम, रिक्वेस्ट आलेली दिसत नाहीये. आम्ही चॅट बॉक्स मध्ये मेसेज पण टाकला. चॅटबॉक्स मध्ये मेसेज पण त्यांनी ड्रॉप केलेला आहे. लीना मॅमनी पी की आहे. लिंक कल की है ना. हाँ वही लिंक है मैंने आपको भेजा. सरांची रिक्वेस्ट आली. मॅडम आमचे सर ऍड झालेत पण तुमचे फॅकल्टी दिसत नाहीत मला लिंक. एक मिनट सर, मी ट्राय करते एकच मिनिट. मॅडम ते काय युट्यूब लिंकला जॉईन झालेत का? मी एक फॅकल्टीची लिंक पाठवली, त्याला जॉईन व्हायला सांगा मॅडम. नाही नाही सर, युट्यूब लिंक वर नाही जॉईन होता. मेन आपल्या फॅकल्टीची लिंक जी आपण काल ट्रायल घेतलेलं ना, तीच लिंक पाठवलेलं. नाही ती पाठवू नका मॅडम, मी आता सकाळी जी पाठवली ती पाठवा तुम्हाला. हो सर, तीच आहे. मी पण त्याच लिंक वर जॉईन आहे जे तुम्ही पाठवलंय. आणि हा त्यांना मी बरोबर ना. नाही, आमचे फॅकल्टी जॉईन झालेत, आमचे सर जॉईन झालेत, प्रिन्सिपल सर जॉईन झालेत, एचओडी सर जॉईन झालेत. एक सेकंड सर. लिंक बघा तुम्ही कुठली यूज केली मॅडम. त्या लेटर मध्ये होता ना वाईट सरांचा नंबर. माशाळकर मॅडमकडनं घेतलं नव्हतं मी, नेटवर्क सर्च. एकच मिनिट. हॅलो. हा दिनेश सर, जॉईन झालात तुम्ही. हॅलो. ओके. हॅलो. हो सर, जॉईन झालात हॅलो. तुम्ही. हॅलो. हॅलो. Yes, sir, you are audible. या सर, या मॅडम या.
Sir, our faculty joined, sir, all. Hello. Okay, okay, madam. Okay. Shubham sir. Shall we start, madam, now? So can we start, sir? Yes, from our side, is there any problem? Yes, sir. Yes, sir. We are Is there ready, any sir. problem? Yes. No, sir. No Uh, problem. We are ready, sir. okay, then immediately ask them, and we should start immediately because 17 minutes already over. Okay, Hmm? okay, sir. We are starting. Okay, okay. Okay. Shall we start, madam? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Good morning, one and all. Good morning. I am Mr. Good morning, Vyas sir. Swayam Prakash, lecturer in E&TC department. I welcome all the participants from all of the Maharashtra state. In this pandemic situation also, we have got the huge response from all over the Maharashtra. Around 470 participants had registered their name for this workshop. I welcome today's guests, Ms. Priyanka Oza Madam, Mrs. Leena Taiwal, Senior Technical Support Engineer, Dinesh Sir, Senior Project Engineer from the world of automation. I also welcome our HOD Mr. Shukunde PP and our beloved Principal Sir Sri Gajanan Dharne Sir for this inaugural function of the workshop. It gives me an immense pleasure to inform you that Sri Siddheshwar Women's Polytechnic Solapur is the first polytechnic institute in Solapur district, second in Maharashtra to get accredited by National Board of Accreditation, New Delhi. I am again very happy to inform that we have re-accredited in 2019. We are also awarded with the Best Faculty Chapter Award by the Indian Society for Technical Education IST. We also awarded the MSBT Best Laboratory Award for our labs. Our is an STEAM institute working in the field of technical education since 2009. Our institute is leading one in social and educational activities. Our college is continuously arranging co-curricular, extracurricular activities. Our college is continuously
arranging co-curricular and extracurricular activities on various technical and non-technical topics for developing the holistic personality of the student. In this process, we have organized a state-level technical workshop on PLC and SCADA in collaboration with the World Automation Private Limited and under IST Indian Society for Technical Education Student Chapter for the third year Electronics and Electrical Engineering Group. Now, I welcome all the dignitaries. Now, I request our HOD, Professor Shigunde sir, to speak to a student in this regards. Shigunde sir. Thank you, sir. Thank you very much. Once again, good morning, one and all. Respected our principal, Sri Gajan Dhanis sir, Director of the World of Automation, Pune. Today's event coordinator, Professor Vyas sir, my colleagues and dear students. I warm welcome to all principal sir, resource person and all participants who registered from throughout the Maharashtra. I am very glad to inform you that in last month we had organized one technical quiz event, and for that also uh, near about 290 students participated. And once again in this month we are organized online workshop on PLC and SCADA with collaboration the World of Automation Pune under IST student chapter. So every year we are going to organize so many workshops, but in this pandemic situation, what to do, how to organize, so many questions were there. But in last year, for faculty throughout India, we organized C++ faculty development program, and there were also huge response were joined for that work. And then after were also conducted so many workshops online for the students and faculty. And today I am very glad to inform you that today also for this workshop, as Vassar said, 477 students participated. So I thanks to all polytechnics principals sir, HOD and all staff who are motivated to all students to participate such technical workshops, technical event. So intention behind that is that to be developed to excel the intellectual as well as motor skill of all students. So considering all these things, today we are organize this technical workshop, and today's resource persons from the World of Automation, Pune, Miss Leena ma'am, and I think Dumal sir, and I also thanks to Oza ma'am. We spread this link for registration just day before yesterday, and we got huge response. And thanks to all polytechnics. And about this PLC workshop, about this PLC and SCADA workshop, actually PLC is based on automation. PLC based automation has a lot of demand nowadays because for example, metro train or mechanical engineering, solar power plant or MACB power distribution or load shedding, all these are remotely controlled through the PLC and SCADA. So it's a very easy to learn and implement also. So we must learn. In last semester you learn PLC, but its next version is SCADA, which is not included in our syllabus.
our college, Sri Siddheshwar Women's Polytechnic, and all departments have the put up intention that after completing this diploma, whatever syllabus is given, that is not sufficient for students, because in the world, every time in electronics field, upgradation is very fast. So we also upgrade, we also update with market. So why this Women's Polytechnic Electronics and Telecommunication Department, every semester we are organizing the latest trend in electronics engineering. So I thanks to all participants who participated in this workshop. I also thanks to the World of Automation who are ready to conduct this workshop. I also insist to all resource person to be conduct this workshop application based, mostly application based. And I also thanks to IST, Mr. Desai sir, who grant the permission to conduct the workshop under IST student chapter. I also thanks to principal sir, our management, who grant the permission to conduct this workshop. And I all the best to all participants. So there are total two session, morning session and afternoon session. After this inauguration function, Vassar will dictate all these things, and which after this event there is one feedback form as well as one small quiz also there. So once again, I all the best to all the students, and thanks to Vassar. Okay. Thank you, sir. Thank you very much. Now, I request Mrs. Leena Taiwal, madam, Senior Technical Support Engineer, to speak few words to the student. Leena, madam. Thank you, sir. Thank you, Vyas, sir. Hey, good morning to all of you. Warm welcome to the session. My name is Leena Taiwal. I'm Senior Technical Support Engineer in the World of Automation, Pune. The World of Automation is an institute where we train the student to achieve their path through their selectable courses like automation, HVAC, embedded system, etc. The world of automation is updated by ISO standards, IAF and IAS. The world of automation is a knowledge-based training institute and professionally run by technocrats having a good and rich experience of providing solution to candidates. Our institute is successfully completed 4 years. Till now, 3,000 plus students have joined our institute for industrial automation, HVAC, and embedded system courses. And you would be happy to know that we have provided placement to all the 3,000 students in 4 companies. We are having a good team of placement who provide employment to the candidates. Our goal is to learn, to grow, to share. So we have 100% placement guarantee. We even provide placement to experienced working professionals. Our motive is to believe in quality education and hard work. We will give our best to make your dreams successful. So again, thanks to all of you for joining the session, and special thanks to President Honorable Sri Dharamraje Kadadi sir, Principal Professor Gajanan Dharne sir, HOD Professional Pramod Shivgunde sir, Coordinator Professor Swam Prakash Vyas sir, for giving us the opportunity to interact to students on an industrial automation topic or SCADA. So not taking much time, I'm introducing our senior automation trainer or today's speaker. His name is Mr. Dinesh Dhumal sir. He is having 6 years experience in automation field. He is expert in this field. He has delivered lecture across 30 plus colleges and more than 2,000 students have attended our workshop. So today's workshop topic is SCADA. Thank you. I would like to invite Dinesh sir. Thank you, sir. Hello, Dinesh sir. Now I request Mr. Dinesh sir, a senior Hello. project engineer, to speak
few words and tell about today's schedule. Okay. So good morning all. Good morning all. First of all, I would like to thanks President Honorable Sri Dharmaraj Kadadi sir, Principal Professor Gajanan Dharne sir, HOD of Electronics and Telecommunication Department Pramod Shivgunde sir, and Event Coordinator Professor Swam Prakash Vyas sir to giving us an opportunity to interact with the MSBT students and give some knowledge about the industrial sector regarding the PLC SCADA and bridging the gap between industry and education fields. So thanks to all Siddheshwar Women's Polytechnic Institute team, and last one is a all the best to all students to participate in the event. Thank you. Now I request Priyanka Ozha ma'am to please share her view. She is a director of the World Automation. I request Priyanka Ozha ma'am to have interaction. Hello, madam. Okay, she might be busy. Now I request our beloved principal sir, Sri Gajanan Darne, to guide our student in this regards. Okay, thank you, sir. First of all, good morning to all of you, my dear students, authorities of the world of automation, IST, and our organizing team, Sri Shivgunde sir, Vyas sir, and their team. Just I want to give the brief information about Sri Siddheshwar Women's Polytechnic. Sri Siddheshwar Women's Polytechnic is established in 2009. Before I want to continue, I would like to announce one thing. This program is sponsored by IST, and the president of IST, he will join at 3 p.m. for our valedictory function as a chief guest. Please note it and arrange accordingly. Sri Siddheshwar Women's Polytechnic is established in 2009, and within 7 years of span of years, we got NBA accreditation from National Board of Accreditation. Ours is the first polytechnic in Maharashtra or in the Pune region to get accredited, which is outcome-based education. That means this is the OBE-based NBA accreditation, first college in Pune region, second in Maharashtra, and I proudly say this is the third polytechnic institute to get accredited by NBA in all over India. I have told you that our polytechnic is working for the women only, with the motto that women's empowerment through technical education. As this is the polytechnic, and our motto is to empower the women through this technical education. For that purpose, we are working on 3 aspects from our inception. The first one is the perfect in theory. Second is competent in practical. And third one is all-round personality. For this purpose, to achieve this goal, we are arranging many activities
as told by our coordinator, Mr. Vyas, lot of co-curricular and extracurricular activity we are arranging, and we are emphasizing on the co-curricular activities. We know the syllabus which is framed by any university or board is not sufficient to run for 3 or 4 years in this changing scenario. Especially when we are talking about the electronics and telecommunication engineering industries and computer and information technology industries, the life cycle is very short, or we can say it is changing very fast. For that purpose, to keep the pace with the changing scenario of industry, it's essential to change the mode of teaching, the mode of learning, and for that purpose we are arranging a lot of activities. Basically, when students are admitting in our college, we are taking care of that she should visit minimum 25 industries in and around Solapur as well as out of Maharashtra. It's because she should know, our candidate should know, the student should know where our knowledge is going to apply. What is the application of our knowledge which we are taking in within these 3 years? And for that purpose, we are arranging industrial visits in Solapur, like a very small industry, up to the BRC, that is Baba Atomic Research Center, as well as Hindustan Aeronautical Limited and ISRO also. Then we are arranging the various expert lecture and experts from the industry to give the up-to-date knowledge and the recent trends in industries. And every year we are arranging minimum 15 to 20 expert lecture for each stream, you can say. Then along with this one, we are arranging 4 to 5 seminars or workshops for the development of the students, and the seminars or workshop which were added up to this till today, they were beyond syllabus. It is not at all included in the syllabus. And my dear students, I am very proud to say that this is also the workshop which is not mentioned in the scope of your syllabus, that PLC and SCADA. And we know that the whole industry and the whole society, as well as every engineering and industries, those are changing very rapidly, and they are taking they are making the use of PLC and SCADA. And we should know the know-how of this SCADA, and there is a lot of scope to make our career in SCADA. And for that purpose, we have arranged this workshop not only for our student, but for the student of the total Maharashtra. I express my sincere thanks to ISE, because ISE, and especially Dr. Pratap Desai, President of ISE, and Mr. Vaidya, Executive Secretary of ISE, they are always inspiring us, and they are always sanctioning our activities, and they are always supporting us. And secondly, our management, our governing body, especially Sri Dharmaraj Kadadi sir, who is the president of our institute, is always supporting the activities we are arranging for the student. And because of this, as we are arranging such a type of activities,
not only for the students, but for the faculty as well as the staff members. And dynamism is nowadays a part of the, you can say, our life. And because of this dynamism, definitely we are going to know the happenings as well as which will happen in future. For that purpose, to enhance the interest of the student, we are encouraging them to participate in various activities like a technical paper presentation, technical quiz competition, technical project competition, and etc. And I very proudly say and announce that more than 650 prizes won by our students in co-curricular activities at Maharashtra state level and national level. I think this is one of the record of getting the prizes. Not only that, because of this knowledge, technical knowledge and hands-on practical, our students are very much interested and very much showing their interest for doing the projects. We always participate in such type of exhibition, and we got the general championship in a defects exhibition. We are arranging the activity for the student and staff member under various professional societies, and especially IST. We got or we won the best faculty chapter of IST for Maharashtra and Goa region. We won, our student won the best polytechnic project award of IST. Not only that, we are also encouraging to the student to participate in co-curricular, extracurricular activities like sports and cultural activities. We successfully got general championship for 3 years of DYF, that is Diploma Youth Festival, in Solapur. We got the general championship in a sports. Not only that, we participated in a competition of best laboratory, and we got the best laboratory award from Government of Maharashtra, that is a MSBTE, and got a 50,000 rupees prize for this one. Not only that, we always participating for improving ourselves, for updating the students as well as the student community. That's why we are keeping the very good relation between the institute and industries. And this program is arranged by the World of Automation, which is a Pune-based company. I especially express my sincere thanks to Priyanka Oza ma'am as well as Zina ma'am and Mr. Dinesh Dhumal sir for cooperating, for arranging such a type of activity for student community. Once again, I express my sincere thanks to ISC and our governing body members and our President, Honorable Dharmaraj Kadadi sir, and I appeal the students. Such a huge
such a huge response we received. Near about 477 students, they are registered and named, and I hope they all will participate in this one-day workshop at Maharashtra level. I wish you all the best, and I appeal, whatever the knowledge will be given by our trainer, you should try to grab it because it is a need of a time. As they are working for training the student community, that means they are a very good job or responsible job they are doing. I also wish them a very best for their future, as well as our students for making a career in PLC and SCADA. Wish you all the best, and I once again thank you all. Thank you very much. Shivani sir, please. Shivani sir. Okay, sir. Thank you. Thank you very much, sir. Definitely, our student will learn from today's workshop, and definitely today's guest, the Dinesh sir, Lina madam, and their team will work for the student. They will teach today on the application base, which will be beneficial for the student in their life. I thank you all of the dignitaries for being present here and to do the inauguration of the function. I declare that the function is now inaugurated. Now I request the world of the automation to start their sessions. And I thank you all for being here for the inauguration. Thank you all. Now I hand over. Sir, Yes, before sir. that, it is better to have give the instructions to the student. Is the one thing, and second thing, at what time the that final program will be arranged. Okay, sir. Give the time, and accordingly communicate to all authorities of World of Automation as well as IST. Okay. Okay, sir. Okay, sir. Dinesh sir. Wes sir, just dictate the today's schedule. Wes sir. Yes, sir. Yes, sir. Doing the same thing. Yes. Yeah. I will share the today's schedule. Yes, sir. The world of automation and Siddheshwar Women's Polytechnic College, in collaborate with Indian Society for Technical Education, has organized an online one-day workshop on PLC SCADA. This is today's schedule for the PLC and SCADA workshop. Now it's already 11, so
First, we'll have the introduction on SCADA and PLC. Thereafter, creating new animations, creating and editing graphics display with the animation. Till 1 p.m. it will be there. After that, there will be a lunch break, and then 2 to 4 there will be writing logic through a script, creating trend and creating alarm and events. This will be a today's schedule. A student who have inquiries, they may ask their questions on live chat on the YouTube. So we may see the questions and answer their queries. Okay, this will be the schedule of today's event. Okay, sir. Session hand over to resource person, our today's expert. Okay, sir. Now I request Dinesh sir and their team to start the session. Okay, thank you, sir. So it is, sir, it is necessary to turn on the video. No, sir, you can share your PPT and all. Yes, 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 yes. Okay, Okay, thank you, sir. okay, sir. Okay. Hello, good morning, all. I'm Dinesh. I'm a senior technical engineer, also a trainer and a project engineer in the world of automation, Pune. So, in today's session, we know and interact and studies about the SCADA. So, we all know about what is meant by automations, what is mean by PLC, what is mean by SCADA. Okay, but we don't know in detail. So, for in detailed manner, we are arranging this kind of workshop to know the what is automation, what is the industrial automation, and how industry to be work in SCADA and PLC. Okay, so in today's sessions we studies up. Firstly, we are going to the automation. So we all know about what is meant by automation. Okay, so automation means what? So automation is, it is a technique in which we gives the human work to the machines. Okay, automation is a technique in which we can give the human work to the machines. So how we give that human work to the machines? So to give the human work to the machine, we must know about how human do that work. Means what? मतलब क्या है, मुझे एक कौन सा भी काम है, और काम मुझे क्या करना है, ह्यूमन का फंक्शन जो कुछ भी है वो डेडिकेटेड टू किसको देना है, मशीन्स को देना है. ओके, दैट इज कॉल्ड एज ऑटोमेशन. सो व्हाट इज ऑटोमेशन? दैट इज अ टेक्निक इन विच वी डेलीगेट द ह्यूमन वर्क गिवन टू द मशीन. मतलब सो मुझे क्या करना है, ह्यूमन का वर्क मशीन को देना है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा मुझे? तो फर्स्टली वो वर्क जो कुछ भी है, तो वो वर्क ह्यूमन कैसे परफॉर्म करता है वो मुझे फर्स्टली देखना पड़ेगा. सही है ना? सो ह्यूमन कैसे परफॉर्म करता है, तो सपोज वी कैन गेट अ सिंपल एग्जांपल दैट आई वांट टू वॉक, or otherwise I want to see. So for walking purpose in human body we require two things. Most important things for walking, that is our legs. Okay, so for walking we require most important part is the leg, and next second part important is that our brain. Why we require brain? Because leg is used to only for walking purpose, but when we want to walk, when we want to stop, that things is done by or controlled by human brain. सही है ना? मुझे चलना है तो चलने के लिए चलने का काम कौन करेगा? मेरे लेग्स करेंगे, मतलब मेरे पैर करेंगे. लेकिन कब चलना है और कब स्टॉप करना है, तो ये लेग्स डिसाइड करते हैं क्या? नहीं डिसाइड करते. तो कौन डिसाइड करता है? तो डिसाइड करने के लिए उसके लिए हमें क्या चाहता है? ब्रेन चाहते हैं. सही है. तो उसी तरह मुझे क्या करना है? सेम ही फंक्शन परफॉर्म करना है. कौन सा भी फंक्शन परफॉर्म. सपोज वी हैव वन रूम्स, एक रूम है, उस रूम का टेम्परेचर हम क्या कर रहे हैं? मेजर कर रहे हैं, मतलब तुम रूम को ऑटोमाइज कर रहे हैं. सो व्हाट इज दैट ऑटोमेशन? एक फैन है और रूम है, रूम का टेम्परेचर जब 30 डिग्री से ऊपर जाएगा, तो एट दैट सिचुएशंस और एट दैट टाइम वी रिक्वायर टू द टर्न ऑन द फैन. मतलब क्या है?
स्विच ऑन मतलब टेम्परेचर 25 डिग्री के ऊपर जाने के बाद मुझे क्या करना है, फैन को ऑन करना है, सही है। सो फॉर दैट ऑपरेशंस we require two things, as generally we know that. First thing is that to measure the temperature we want one device, means what, मुझे क्या करना है, टेम्परेचर मेजर करना है, उसके लिए मुझे क्या चाहिए, एक डिवाइस चाहिए। ओके, तो उस डिवाइस को क्या कहते हैं हम, टेम्परेचर सेंसर्स कहते हैं, सही है। so टेम्परेचर सेंसर, एंड आफ्टर दैट वी वांट सेकंड थिंग्स, दैट इज व्हाट, दूसरी चीज क्या चाहिए हमें, उस नेक्स्ट पार्ट दिस इज व्हाट वी वांट टू टर्न ऑन, मुझे क्या टर्न ऑन करना है, मुझे टर्न ऑन क्या करना है, फैन टर्न ऑन करना है, सही है। सो मुझे फैन चाहिए। तो इस ऑपरेशन के लिए बेसिक चीजें दो चाहिए, कौन, एक टेम्परेचर सेंसर चाहिए और दूसरा चाहिए फैन। सो इन ऑटोमेशन सिस्टम वी ऑलवेज स्टडी अबाउट थ्री थिंग्स। ऑटोमेशन में हम क्या करते हैं, हमेशा तीन चीजों का स्टडी करते हैं। तो मैं आपको पेंट में लिख के दिखाता हूँ ये चीजें कौन से, उसको हम कंपोनेंट्स ऑफ ऑटोमेशन ऐसे कहते हैं। तो जस्ट वेट, आई एम ओपनिंग माई पेन। सो तीन चीजें कौन से है, दैट इज अ कंपोनेंट ऑफ ऑटोमेशन। So see here, component of automations. From that, first component is that is a field instrument. What is a field instrument? The instrument which is actually doing some work. मतलब what, ऑटोमेशन में जब हमको कौन सी भी प्रोसेस का अदरवाइज कौन सी भी मशीन का मुझे ऑटोमेशन करना है, तो उस ऑटोमेशन के फंक्शन में जो एक्चुअली काम करता है, ठीक है, लाइक टेम्परेचर सेंसर। टेम्परेचर सेंसर क्या है, एक्चुअली काम करने वाला है, क्या काम करने वाला है, विच सेंस द टेम्परेचर, वो क्या करने वाला है, टेम्परेचर को सेंस करने वाला है। इज इट करेक्ट, वो टेम्परेचर को सेंस करना है। आल्सो फैन, फैन क्या होने वाला है, फैन क्या होने वाला है, हमें क्या देने वाला है, रोटेशंस देने वाला है, मतलब क्या करने वाला है, फैन ऑन होने वाला है, अदरवाइज ऑफ होने वाला है। बट व्हेन फैन इज ऑन एंड व्हेन फैन इज ऑफ, ये डिसाइड करने वाला कौन है, तो उसके लिए टेम्परेचर सेंसर सिर्फ क्या करेगा, टेम्परेचर सेंसर हमें टेम्परेचर कितना डिग्री सेंटीग्रेड है वो हमें बताएगा, मतलब क्या है, तो सिर्फ टेम्परेचर की इंफॉर्मेशन देगा। फैन क्या करेगा, फैन सिर्फ क्या करेगा, फैन मुझे बताएगा कि क्या कितने डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर है, सॉरी फैन क्या करेगा, सिर्फ ऑन और ऑफ हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों केस में आते हैं, तो एक्चुअली काम करने वाले, तो इसको हम क्या कहते हैं, फील्ड इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। ठीक है, लेकिन जब 25 डिग्री के ऊपर जाने के बाद टेम्परेचर मेरा फैन टर्न ऑन होना चाहिए, सो एक कंडीशन कौन डिसाइड करने वाला है, तो एक कंडीशन डिसाइड करने के लिए हमें एक सिस्टम चाहिए और अदरवाइज एक डिवाइस चाहिए, जिस डिवाइस के पास कंट्रोल करने की एक्टिविटी एबिलिटी होती है, दैट इज कॉल्ड एज कंट्रोल हार्डवेयर। तो कंट्रोल हार्डवेयर, so what is the function or what is the role of control hardware? What is the function of control hardware and controller? The control hardware is used in automation as a device which is used to only control action. एक क्या डिवाइस है, सिर्फ कंट्रोल एक्शन लेने के लिए यूज करते हैं। ओके, आपने बहुत सारे कंट्रोल हार्डवेयर अपने कॉलेज में सीखे होंगे, आपको पता होगा। सो फ्रॉम दैट वी नोज अबाउट इन E&TC department, otherwise electrical department, we know about microcontroller, otherwise microprocessor. So what is a microcontroller and microprocessor? So basic things that what is the difference between microcontroller and microprocessor? We know about that. Microprocessor is a things. Just a minute. Okay, that thing is known as microcontroller. Difference between microcontroller and microprocessor is that microprocessor is a device which is only able to do processing. So if you want to do anything or any part, so मुझे उसके लिए कौन सी भी चीजें लगने वाली है, लाइक सपोज मुझे एनालॉग इनपुट्स कनेक्ट करना है, तो एनालॉग इनपुट्स के लिए क्या लगता है, हमें एडीसी लगता है। तो वो एडीसी है, वो प्रोसेसर में अवेलेबल नहीं होता, उसको हम क्या कहते हैं, एक्सटर्नली कनेक्ट करते हैं। ओके, आफ्टर दैट
मुझे प्रोसेस करने के लिए वो जो अदरवाइज प्रोग्राम लिखने के लिए कुछ तो मेमोरी लगती है. So that program memory is also not available in microprocessor. That part is also connected externally to the microprocessor. मतलब क्या है, कौन सा भी ऑपरेशंस करना है तो उस ऑपरेशंस करने के लिए कौन सी भी चीज चाहिए और हमें सभी चीजें हमें क्या करते हैं, एक्सटर्नली कनेक्ट करनी पड़ती है. ओके, बट इन माइक्रो कंट्रोलर ऑल दैट पार्ट इज अवेलेबल इन इंटरनली. मतलब जो कुछ भी चीजें वो क्या होती है, इंटरनली अवेलेबल होती है. ओके, so that is the basic difference between microprocessor and microprocessor. ये बहुत चीजें किसमें प्रेजेंट होती है, एज अ कंट्रोल हार्डवेयर में. तो यहाँ पे कौन से कंट्रोल हार्डवेयर है, एज ए इंडस्ट्रियल हम पीएलसी यूज करते हैं, अदरवाइज माइक्रो कंट्रोलर होता है, अदरवाइज कौन सा भी आर्डिनो ले लो. तो आपको ये मालूम होना जरूरी है कि इंडस्ट्री में हम माइक्रो कंट्रोलर भी यूज कर सकते हैं, आर्डिनो भी यूज कर सकते हैं और पिक भी यूज कर सकते हैं. सही है. सो इनमें से हम कोई भी कंट्रोलर यूज नहीं करते इंडस्ट्री में. मैक्स टू मैक्स हम इंडस्ट्री में पीएलसी यूज करते हैं. उसका रीजन क्या है, एक मिनट प्रियंका, चार्जर, इसका रीजन क्या है, तो इसका रीजन देखो, उसकी रिलायबिलिटी. सो व्हाट इज मीन बाय रिलायबिलिटी, सो वी मस्ट नो अबाउट व्हाट इज मीन बाय रिलायबिलिटी. सो रिलायबिलिटी का मतलब क्या है पता है आपको. सो रिलायबिलिटी मतलब एक ऐसा डिवाइस होता है, एक्चुअली अच्छा रिलायबल डिवाइस किसको कहते हैं, जो कौन सी भी कंडीशन में, कौन सी भी फिजिकल कंडीशन में वो क्या करता है, वर्क करता है. कौन सी भी फिजिकल कंडीशन में क्या करेगा, वो वर्क करेगा. ओके, तो कौन सी भी फिजिकल कंडीशन में वर्क करेगा मतलब क्या है, सपोज इंडस्ट्री है, मेरे इंडस्ट्री में वाइब्रेशंस हो गए, टेम्परेचर्स वेरी होगा, मॉइस्चर्स हो गए, मतलब अलग अलग सी कंडीशन अलग अलग इंडस्ट्री में होती है. सही है. सो एट विच पीएलसी एक ऐसा डिवाइस है जो हर एक चीज में, मतलब कौन सी भी फिजिकल कंडीशन हो जाए तो सेम हर एक फिजिकल कंडीशन में, मतलब डिफरेंट फिजिकल कंडीशन में सेम ही तरह रिस्पॉन्स देता है. सो दैट्स व्हाई पीएलसी इज कॉल्ड एज अ मोस्ट रिलायबल डिवाइस, एंड दैट्स व्हाई इन इंडस्ट्रियल ऑटोमेशंस we max to max use which thing, PLC, that is for control hardware. मतलब what, so to connect the temperature sensor and the fan, in between both of them we connect one device, and that device is used to take a control actions on temperature sensor and fans, and that device is called as control hardware. Okay, that is a PLC. So PLC को in industrial manner में हम ऐसे कहते हैं कि it is an programming interface between input field devices and output field devices. Okay, so what is that? PLC is a device which is a programming interface between input field device and output field device. Okay, and after that next part is coming in the automation, that is a use for smart automation system. So what is a smart automation system? In smart automation system, we don't want to go on field to take any types of control action, also to take ऑब्जर्वेशन एंड मॉनिटरिंग सिस्टम. मतलब क्या है, मेरी जो कुछ भी प्रोसेस है उस प्रोसेस को मॉनिटर करने के लिए, अदरवाइज ऑब्जर्व करने के लिए मुझे कौन सी भी किसी भी जगह से जाने की जरूरत नहीं. मैं घर में बैठा हूँ, अदरवाइज मैं ऑफिस में बैठा हूँ. मतलब सपोज इन टुडे सेशन लॉट्स ऑफ स्टूडेंट्स कमिंग फ्रॉम द लॉट्स ऑफ एरिया. सही है. सो वी कैन कंसिडर दैट my plant is available at lots of areas, like suppose I am in Pune and my plant is available at like Solapur, Sangli, Kolhapur, Mumbai. Okay, but I am in Pune and I want to control the R4 plant from central location, that is from Pune. So for that purpose we require one software. That software is always connected to the which thing, that is a control hardware, that is meant by PLC. एक चीज ध्यान में रखना है, कंट्रोल सॉफ्टवेयर एक ऐसी चीज है वो कभी भी पूरी तरह से कंट्रोलर नहीं होता. वो ऐसा डिवाइस है जो हमेशा एक्चुअली कंट्रोलर को कनेक्ट करता है. मतलब एक्चुअल ऑटोमेशंस डू बाय विच थिंग, दैट इज अ कंट्रोलर. एक्चुअल ऑटोमेशंस कौन करता है, पीएलसी ही करता है, दैट इज अ कंट्रोलर ही करता है. मतलब फील्ड इंस्ट्रूमेंट से कौन से भी है, फील्ड इंस्ट्रूमेंट में बेसिकली दो टाइप्स आते हैं. तो कौन से टाइप्स आते हैं, दैट इज इनपुट्स एंड आउटपुट्स.
So inputs and outputs also have two types, that is a digital and analog. So what is meant by digital and what is meant by analog? So digital is a things, or digital signal is a signal which have only two conditions. Digital signal is a signal which have only two conditions. First one is that, which condition? First one is that is a 0, and second one is that 1. Digital signal have only two conditions, only 0 and 1, means on and off. Okay, and in next signal is that is analog signal. So what is meant by analog signal? The signal which varies its value from minimum to the maximum. एक ऐसा सिग्नल है जिसकी वैल्यू मिनिमम टू द मैक्सिमम कंटिन्यूअसली वेरी होती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम. That type of signal is called as analog signal. Okay, and that both signal, digital and analog, is present in inputs and outputs. Okay, so what is digital input? Switch है, push buttons है, like limit switch है, IR sensor है, proximity sensor है. ये जो सभी सेंसर्स है, हाँ, ऐसे सेंसर्स है जिसकी कंडीशन सिर्फ ऑन और ऑफ होती है, उसको हमेशा हम डिजिटल इनपुट्स कहते हैं, अदरवाइज डिजिटल, हाँ यस, डिजिटल इनपुट्स कहते हैं. ओके, then after that temperature sensors, going to the analog sensors, temperature sensors, we can say that like temperature is on and temperature is off. ऐसा कहते हैं क्या हम कभी? टेम्परेचर ऑन है अदरवाइज टेम्परेचर ऑफ है, ऐसा कहते हैं क्या? ऐसा कभी भी नहीं कहते. क्या कहते हैं फिर? वी से दैट हाउ मेनी डिग्री टेम्परेचर, लाइक 20 डिग्री टेम्परेचर है या 35 डिग्री टेम्परेचर है. मतलब क्या है? उसकी कुछ तो इंस्टेंस वैल्यू होती है, मतलब कुछ तो वैल्यूज होती है उसकी, और वो कहाँ से कहाँ तक होती है? उसकी वैल्यू मिनिमम टू द मैक्सिमम, कुछ तो उसकी कुछ तो रेंज होती है, उसमें होती है. ओके, सो दैट टाइप ऑफ सिग्नल इज कॉल्ड एज एनालॉग सिग्नल. ओके, सो डिजिटल मतलब ऑन ऑफ और एनालॉग मतलब वेरी हो गया. उसके बाद आपको ये मालूम होना चाहिए कि सेंसर्स क्या है. तो व्हाट इज अ सेंसर? सेंसर इज अ डिवाइस which convert physical quantity to इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी. सेंसर एक ऐसा डिवाइस है, वो फिजिकल क्वांटिटी का कन्वर्जन इलेक्ट्रिकल, मतलब प्रेशर का कन्वर्जन इलेक्ट्रिकल में करेगा, लाइक वोल्टेज और करंट में करेगा. सो व्हाट इज दैट इलेक्ट्रिकल सिग्नल फॉर डिजिटल? दैट इज 0 volt or 5 volt, and for analog it vary from 0 to 10 volt or 4 to 20 milliampere. That is the standard analog signals which is known by any types of control hardware. Okay, so that is about field instrument. So आपको मालूम होना चाहिए कौन से एनालॉग फील्ड इंस्ट्रूमेंट्स है और कौन से डिजिटल फील्ड इंस्ट्रूमेंट्स है. So sensor always connect as an input. Okay, so next part is that actuator. So what is actuators? It's convert which thing into which thing? Electrical quantity into physical quantity. Okay, and all the actuators is acts as a output. Okay, that is all about field instruments. We actually काम करते हैं, and that is the most important part of the automation system. Like जैसे ह्यूमन बॉडी में हमारे हाथ पैर नाक से, मतलब जो कुछ भी आपने ह्यूमन बॉडी में पार्ट्स है, उसको हम क्या कहते हैं? हात पाय नाक डोळे जे असतात त्यांना काय म्हणतो मला आता आठवत नाही. तर ते पार्ट्स आहेत जेवढे इम्पॉर्टंट आहेत तुमच्या ह्यूमन बॉडीमध्ये, like that in automation systems should be most important that inputs and outputs. Okay, so that is the first part. After that, like human brain in automation system, we use next part, that is the control hardware. And last and most important part that is covered in today's session, that is a control software. That this thing is used for advanced automation. ऑटोमेशन को एडवांस करने के लिए यूज करते हैं. ओके, सो इससे क्या होता है? वी कैन कंट्रोल, मॉनिटर एंड एक्वायर डेटा ऑफ आवर प्लांट और मशीन
from remote locations. What is remote location? In brackets, we can say that from anywhere. Okay, that is about control software, and in automation system as a control software, we always study SCADA. So in the first most important thing, that is what is meant by SCADA and what is the role of SCADA. SCADA is a system which is able to monitor and control the plant from the remote location, and that system is used as a control software in automations. Okay, that is the first part of the theory. So anyone have an issue regarding that? So please, if anyone have an issue or any problems, then please send your problem or ask your questions in the comment box. We will wait for the 2 minutes for your reply. After that, we consider that we all the clear concept and we can start our session. Okay. So anyone have doubts in components of automations? So please ask your questions. I'm online to see your comment. So please ask anyone have a doubt regarding what is the role of SCADA in automation, what is the role of PLC in automation, and what is the role of sensors and actuators in automation. Anyone have a doubt? Please ask your question. So no one have a doubt, I think. So can we go for the actual part of the session, that is the SCADA? Please reply. It's most important that reply is coming from your side. So can we go for SCADA? It is just an introduction about automation system and the role of SCADA and role of PLC in automation. Yes, sir. We get the reply from one student that we are go to the SCADA. So we going towards the SCADA. Okay. Thanks to all. Okay. So one question is that what is the main use of SCADA in automations? Okay. So Rohini, we do that part in our PPT's explanations, so we can get the overall things. Okay. So now we go towards the SCADA. You are seeing my PPT views of SCADA. So what is the SCADA? Long form of SCADA is that supervisory control and data acquisition. Okay. So from that name, we conclude that all the parts and all the things about the SCADA. Okay. So in name, we have two things. Okay. So I'm clear that part and take a new thing, a new window. Okay. So next part is that SCADA का long form है. SCADA. Okay. So SCADA includes only three things. First one is a S for supervisor. Like in general, we can say that supervisor. Next one is that C, means control, and last one is that A means and D means data, and A means acquisition. Okay, so that is the basic long form of SCADA: supervisor, control, and data acquisition. Okay, so in general, we know about that. What is the role of supervision? Supervisor is a person which is used to observe our system or observe our work. Okay, so what is supervisor? To observe and monitor plant. Okay. Okay. One question is that what is a transducer? So all you know about transducer. Transducers includes both parts, that is sensors and actuator. Sensors and actuator both are coming from the transducer. Transducer is a device which converts electrical energy into physical energy, as well as physical energy into electrical energy. Means what? Transducers, it is a device which converts any types of energy into another type of energy. मतलब कौन सी भी एनर्जी का कन्वर्जन, मतलब कौन सी भी क्वांटिटी का कन्वर्जन कौन सी भी क्वांटिटी में जब हम करते हैं उसको हम ट्रांसड्यूसर कहते हैं. So it is getting, what is a transducer? Transducer is a device which converts any type of energy into another type of energy.
तो कौन सी भी होती है, इलेक्ट्रिकल का फिजिकल होता है, फिजिकल का इलेक्ट्रिकल होता है, कौन सी भी चीज में हो सकता है। ओके, इट्स क्लियर व्हाट इज मीन बाय ट्रांसड्यूसर। ओके, थैंक यू। ठीक है, नाउ इट टर्न्स टू व्हाट द SCADA। सो व्हाट इज मीन बाय सुपरवाइजर एंड रोल ऑफ सुपरवाइजर। रोल ऑफ सुपरवाइजर इज दैट टू ऑब्जर्व एंड मॉनिटर प्लांट, मतलब जो कुछ भी हमारा वर्क है उसका, उस वर्क को ऑब्जर्व करने का और मॉनिटर करने का काम कौन करता है, सुपरवाइजर करता है। सो what is a control means to take any action to change the plant condition, means what, कौन सी भी एक एक्शन लेना, ड्यू टू दैट एक्शंस हमारे प्लांट में कुछ तो चेंजेस हो सकते हैं, लाइक हमारा प्लांट स्टार्ट हो सकता है, प्लांट स्टॉप हो सकता है। लाइक सपोज इन प्लांट वी हैव अ मोटर, सो टू टर्न ऑन दैट मोटर वी हैव टू टेक कंट्रोल एक्शंस। ओके, सो कंट्रोलर क्या करता है, उधर जाएगा, वहां पे एक बटन होगा और बटन को प्रेस करेगा। दैट इज अ सिंपल बेसिक रोल ऑफ कंट्रोल। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द SCADA, आई एम talking in general what is a control, what is a supervisor, and what is a data acquisition. Okay, and after that I'm going towards the data, but now situation I'm just telling about simple concept. Okay, after that what is the data acquisition? So data acquisitions means what, it is a technique in which we can take data from field and store at any database. ओके, अदरवाइज उसको हम क्या कहते हैं, डेटाबेस मतलब एनी लोकेशन, दैट इज द डेटा एक्वाजिशन। ओके, तो ये तीन चीजें हैं which includes in SCADA. First thing is that observe and monitor plan. Next one is that to take any types of action, otherwise control actions. And last part is that it is a technique in which we can take a data from SCADA, data from field, and store it at any locations. Okay, so ये तीन चीजें जिसमें होती है, मतलब ये तीन चीजें काम करने के लिए एक्चुअली मेरे पास SCADA नहीं होगा। सो एट दैट टाइम आई वांट टू डू दैट थिंग्स। सो मुझे तीन आदमी लगेगा, एक सुपरवाइजर करके लगेगा, नेक्स्ट वाज वो लगेगा एज अ कंट्रोलर करके लगेगा, और नेक्स्ट वाज एज अ प्रोग्रामर करके लगेगा। वो क्या करेगा, डेटा स्टोर करने के लिए वैल्यूज लेगा। ओके, सही है, बट ड्यू टू द SCADA, due to the one system, we do the all things only by one person. ओके, मैं एक एग्जांपल और एक बार मैं आपको बताता हूँ। मेरा प्लांट 4 जगह है। ओके, सोलापुर में है, सांगली में है, कोल्हापुर में और मुंबई में है। इन 4 places I have my plant, and त्या चारी प्लांटचा डेटा मी एकाच ठिकाणी बघतोय, आणि तिथून मी फ्रॉम दॅट सेंट्रल पॉइंट आय एम गेटिंग द ऑल द डेटा फ्रॉम ऑल 4 प्लांट, and also from central location I am monitoring all 4 plant, and also from that central location if I want to change the any types of condition of plant, मतलब फर्स्ट प्लांट जो सोलापुर का है उसको मैं अभी ऑन करना चाहता हूं, तो मुझे ऑन करने के लिए वहां पे जाने की जरूरत नहीं, मैं अभी पुणे में बैठ के उसको ऑन करता हूं। सो इन दैट प्लांट suppose any motors or any fan is present, that's turn on at any instance, so also that thing is done by me from the Pune. Okay, मतलब कौन सी भी जगह पे मैं बैठा हूँ, पुणे में बैठा हूँ, और वहां से मैं मेरे 4 ही प्लांट को एक ही सिस्टम को कनेक्ट करता हूँ, और उस सिस्टम से मैं उसके 4 ही प्लांट का ऑपरेशंस पुणे में बैठ के कंट्रोल करता हूँ। ठीक है, ऐसे एक सिस्टम की ऐसे एक फैसिलिटी देने वाले सिस्टम है, दैट इज अ SCADA. Okay, and after that last thing is that data acquisitions. So what is mean that data acquisition? 4 मेरे अलग अलग से प्लांट हैं। सो हर एक प्लांट में कितनी प्रोडक्टिविटी मिल रही है, कौन सी मशीन्स कितने काम कर रही है, वहां पे टेम्परेचर कितना था, कौन सी मशीन में कितना टेम्परेचर था, कौन से मोटर शुरू है, कौन से मोटर्स बंद है, फैंस बंद है, लैंप्स बंद है, अलार्म्स कौन सा जनरेट हो रहा है। सो आई एम नॉट एबल टू टेक ऑल द डेटा इंडिविजुअली। ओके, सो to that, for that to minimize that things, और एक मैंने सिस्टम यूज की है। ये सिस्टम क्या करती है, मेरे हर एक
प्लांट का डेटा मुझे कंटिन्यूसली एक ही जगह मुझे क्या दे रही है, मतलब हर एक प्लांट का डेटा मुझे क्या एक ही लोकेशन पे मिल रहा है। सो ये तीन चीजें हैं, मतलब क्या है, 4 प्लांट को रिमोट या पुणे से ऑब्जर्व करने की फैसिलिटी, 4 थिंग्स को पुणे से कंट्रोल करने की फैसिलिटी, और अल्सो जो 4 प्लांट से वो 4 प्लांट्स का कंटिन्यूसली डेटा एक्वायर करने की फैसिलिटी। ये तीनों फैसिलिटी मुझे एक 3 अलग अलग सिस्टम से नहीं मिल रही है, एक ही सिस्टम से मिल रही है। दैट सिस्टम इज कॉल्ड एज SCADA, that is a supervisory control and data acquisition. Okay, and that system is used as a advanced system, that is a control software in the automation. Okay, that is a basic regarding SCADA. SCADA एक ऐसी सिस्टम आहे, SCADA एक अशी सिस्टम आहे, मराठीत थोडं सांगतो बघ, सगळे जण मराठी आहेत, एकदम मी मराठीत एक्सप्लेन करतो. SCADA एक अशी सिस्टम आहे जी आपल्या प्लांटला ऑफिस मध्ये बसून एका सेंट्रल लोकेशन मध्ये बसून सगळ्याच्या सगळ्या प्लांटला एका ठिकाणावरून काय करू शकतो, ऑब्झर्व करू शकते किंवा मॉनिटर करू शकते कंटिन्युअसली. जर त्याच ठिकाणी बसून मला एखाद्या प्लांटला चालू करा किंवा बंद करायचे, तो कोणती पण एखादी कंट्रोल ऍक्शन कोणत्या बी एका प्लांट वरती घ्यायची असेल तर मला प्रत्येक प्लांटच्या ठिकाणी जायची गरज नाही. मी ज्या ठिकाणी प्रेझेंट आहे सेंट्रल लोकेशनला तिथूनच मी 4 प्लांटला काय करू शकतो, कंट्रोल ऍक्शन्स पण घेऊ शकतो, आणि त्याच लोकेशनवरून मी 4 प्लांटची जी काही इन्फॉर्मेशन आहे माझा जी रिक्वायर आहे ती रिक्वायर मी त्याच लोकेशनवरून घेऊ शकतो. That system is called as SCADA, supervisory control and data acquisition. So in short, we define the SCADA. SCADA is a system, or SCADA is a technique in which we can monitor or observe our plant continuously. Then if plant needed to take any control action, then SCADA is allowed to take control action from a remote location. And using a data acquisition technique, we store the data of plant. That is a basic definition and basic concept of SCADA. So anyone have issues in that system? SCADA च्या डेफिनेशन मध्ये, बेसिक SCADA मध्ये कोणाला काही डिफिकल्टीज आहेत का? Anyone have doubts? Please ask. Anyone have doubts regarding SCADA basics? Please do reply fast. Okay, thanks for your reply. Okay, so now we turn towards it is a basically SCADA, but why we use SCADA? The most important part, that why we use SCADA. In PPT you see that is a basic. Yes, Harshavardhan, I'm going to that point where is used the SCADA more. Yes, I'm going to that point. Okay, so in on screen you see the basic animation diagram of our plant, that is a SCADA system. ये जो एनिमेशन दिख रहा है ना, ऐसा सेम एनिमेशन हम क्या करने वाले हैं आज के सेशंस में. तो ये थोड़ा सा बड़ा है, इसमें से हम छोटा पार्ट देखेंगे. हाँ, ये छोटा सा हम इसमें आज के सेशन में हम ऐसा ही प्लांट एक बनाने वाला है जिससे आपको समझ में आएगा. सो हाँ, यस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पीएलसी एंड SCADA? तो अभी मैंने बताया सिस्टम में, ऑटोमेशन में पीएलसी एज अ कंट्रोल हार्डवेयर यूज करते हैं. मतलब एक्चुअली जो कंट्रोल एक्शन लेने वाला है वो कौन है? हमेशा पीएलसी है, प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर. दैट इज द मेन पार्ट ऑफ ऑटोमेशन सिस्टम. मतलब जो कुछ भी सिस्टम को ऑटोमाइज करने वाला है, जो कुछ भी कंट्रोल एक्शन लेने वाला है, वो एक्चुअली कौन है? पीएलसी है. सही है. बट पीएलसी जब कंट्रोल एक्शन लेता है ना, तब मुझे वहां पे उधर जाके सिग्नल देना पड़ता है. सही है. तो मुझे क्या करना है, सिग्नल मुझे वहां पे जाके देने जस्ट एक मिनिट मयूर, एक क्वेश्चन क्लिअर करतो. सो मला तिथे जायचं नाही प्रोसेस वरती की तिथे जाऊन प्रोसेसला कंट्रोल करण्यासाठी कंट्रोलर वापरलाय, पण तिथे जायचं नाही. मला काय करायचं आहे, तो जो कंट्रोलर वापरलेला आहे, तो जो कोण पीएलसी वापरलेला आहे, त्या पीएलसीला मला त्या लोकेशन वरती न जाता मी आता अवेलेबल आहे रिमोट लोकेशन वरती. वाय? बिकॉज माझे 4 प्लांट आहेत, 4 प्लांट वरती 4 वेगवेगळे पीएलसीज आहेत. ते पीएलसी तिथल्या सिस्टमला ऑटोमाइज करतात.
सो मला तिथं न जाता मला की काय मला घरी बसलोय मी आणि मला घरात बसून मला काय करायचं आहे सिस्टीमला ऑपरेट करायचं तर मी काय करणार एक सिस्टीम वापरणार स्काडा वापरणार त्या स्काडामध्ये मी अॅनिमेशन्स तयार करणार आणि युझिंग दॅट अॅनिमेशन मी स्काडाच्या सॉफ्टवेअरमध्ये एक बटन प्रेस केलं की तो सिग्नल माझ्यापासून कुठे जाणार वेर पीएलसी कडे जाणार तो पीएलसी सिग्नल ऍज अ इनपुट म्हणून घेणार आणि ऑन द बेसिस ऑफ दॅट सिग्नल पीएलसी ऍक्च्युअली प्लांट वरती कंट्रोल ऍक्शन्स घेणार ओके सो ऍक्च्युअली कंट्रोलर इज दॅट पीएलसी अँड टू गेट सिग्नल त्या पीएलसी ला सिग्नल देण्यासाठी स्काडा वापरतो दॅट इज अ क्लिअर व्हॉट इज द डिफरन्स बिटवीन पीएलसी अँड स्काडा रोहिणी इट इज क्लिअर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पीएलसी एंड स्काडा समझ में आ गया क्या सो नेक्स्ट पार्ट इज दैट पीएलसी एंड स्काडा कनेक्ट करने के साथ ही हाँ सो टू कनेक्ट द पीएलसी एंड स्काडा वी यूज वन थिंग्स that is known as a communication protocol so in market we have a number of communication protocols we knows about that so what is the communication protocol that is simply a cable which is the ability to transfer data from one location to the another location एक असं डिव्हाइस आहे ज्या डिव्हाइसची ॲबिलिटी आहे एका लोकेशन मधून दुसऱ्या लोकेशनला डेटा ट्रान्सफर करण्याची ओके सो कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल ऑलवेज हॅव टू टाइप्स वायर्ड कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल अँड वायरलेस कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल इन वायरलेस कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल we use Wi-Fi, Bluetooth, Zigbee, any other communication protocols, and in wireless communication protocol for industrial wired communication protocol, we use RS-232, USB, Ethernet, Profinet, MPI, RS-485, control net, device net. So इनमें से कोई भी कौन सा भी एक communication protocol that is connected by your PLC and SCADA और that is allowed for your PLC and SCADA ये कौन सा भी कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल यूज करके हम क्या कर सकते हैं उसको कनेक्ट कर सकते हैं ओके तो सिद्धि ने हमें क्वेश्चन पूछा है एनी अदर ऑप्शनल फॉर द स्काडा तो स्काडा के लिए ऑप्शन ऐसा है यूजिंग आईओटी हम क्या करते हैं वेब पेज क्रिएट करते हैं एंड यूजिंग दैट वेब पेज वी कैन कंट्रोल आवर सिस्टम फ्रॉम द रिमोट लोकेशंस तो उसके लिए हम क्या करते हैं सर्वर से कम्युनिकेशंस करते हैं बट एक चीज उसमें क्या है कि जैसे स्काडा में एक्चुअल एनिमेशंस बनाते हैं उतने सारे एनिमेशंस हम आईओटी के मतलब वेब ब्राउजर में आपको बनाना होगा so it is somehow difficult okay and it's required to know about any types of programming languages like कौन सी हो उसको लगते हैं वो आपको सीखनी चाहिए तो आपको सीखना वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा तो इसके लिए स्काडा एक ऐसी सिस्टम है जो इजीली एनिमेट कर सके यूज करके हम इजीली सिस्टम को हैंडल कर सकते हैं ओके सो एनी अदर सिस्टम इज आईओटी but we going towards the SCADA because it is the very easiest system in the market okay it is clear who asked the question that is the Siddhi it is a clear what is the operational system and why we do the do that things using SCADA तो जो कुछ भी मुझे एनिमेशन बन के रिमोट लोकेशन से कंट्रोल करना है तो उस रिमोट लोकेशन से कंट्रोल करने के लिए हम एग्जैक्टली आईओटी का यूज भी कर सकते हैं लेकिन आईओटी में थोड़ी थोड़ी जब आपका एनिमेशन क्रिटिकल हो जाएगा तो क्रिटिकल एनिमेशन करने के लिए आपको सीएसएस वगैरह वो लैंग्वेजेस से वो सीखनी पड़ेगी तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है सो बाय यूजिंग स्काडा इट इज अ वेरी इजीएस्ट पार्ट एक ऐसा इजी आपको आज के पार्ट सेशन में समझ में आएगा ओके so that is our plan after that why we use SCADA who is asking that question that is a Harshvardhan so SCADA ही की यूज करना है okay so first thing that before going to SCADA our system is controlled by PLC or any types of controller सही है तो उस वक्त क्या होता था ऑटोमेशन होता था क्या होता था लेकिन for that automations we have to knows about or the we have to study about specific programming language आपको एक specific programming language सीखनी पड़ेगी सही है so but using SCADA आपको कौन सी भी programming language सीखने की जरूरत नहीं why because SCADA is a system which is gives actual pictorial view of our process or plan SCADA क्या है एक ऐसी सिस्टम है क्या करते हैं पिक्चोरियल व्यू प्रोवाइड करता है किसका पिक्चोरियल व्यू प्रोवाइड करता है आप हमारे प्रोसेस का पिक्चोरियल व्यू प्रोवाइड करता है सही है so for doing that pictorial view we have to do only animations part like animation मध्ये जसं असतं
पेंट मध्ये जसं असतं ना, लाइक दैट. यस यस, मैं बताने वाला हूँ अभी विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज्ड इन स्काडा. सो अभी मैं बेसिक बता रहा हूँ. सो स्काडा में कैसे होता है, तो इसमें क्या करना है, सिर्फ हमें एनिमेशंस करना है. सो हाउ टू दैट एनिमेशंस, उसको हम क्या करने वाले हैं, सिर्फ प्रॉपर्टीज देना पड़ता है. तो आपको जब प्रैक्टिकल आ जाएगा तो समझ में आएगा कि बहुत इससे बहुत इजिएस्ट पार्ट ऑफ द थिंग्स और इजिएस्ट पार्ट ऑफ आवर लाइफ. तो आपको सिर्फ एनिमेशंस करना है, उसको प्रॉपर्टीज देना है. So by giving that property, our system becomes the automated. Okay, so that's why SCADA is why, because it is a very easiest part to learn and very easiest part to do. Okay, after that next part, it is a easy to understand the status. मतलब क्या है, तो हमें क्या दिख रहा है, पिक्चोरियल व्यू दिख रहा है. सो आपको वो क्या, देखो कौन सा भी स्टडी भी करना है आपको. सो इफ यू वांट टू डू स्टडी, and that study part is available in the forms of animations. Okay, so at that instance we get that things easiest way. Okay, मतलब क्या है, कौन सी भी थिंग का आपको एनिमेशन मिलेगा तो आपको समझने के लिए बहुत इजी होता है. दैट्स व्हाई वी यूज स्काडा. ओके, बिकॉज क्या है, क्या दिखाएगा हमें, पिक्चोरियल व्यू दिखाएगा. तो इससे हमें कौन सी भी कंडीशन, मतलब टैंक फिल हुआ है या एम्प्टी हुआ है, मोटर कौन सी शुरू हुई है या बंद है, समझने के लिए बहुत इजी आएगा. व्हाई, बिकॉज आई डोंट नो अबाउट एनी टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. आई ओनली नो जनरल लैंग्वेज. तो फॉर अंडरस्टैंडिंग द जनरल लैंग्वेज वी यूज द स्काडा. ओके, सो दैट इज व्हाई वी यूज स्काडा. इसको कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करनी नहीं पड़ती, उसके लिए सिर्फ प्रॉपर्टी देना है. स्काडा बेसिकली क्या देता है, हमें पिक्चोरियल व्यू प्रोवाइड करता है, तो उससे समझने के लिए बहुत इजी है. तो स्काडा में हम पिक्चोरियल व्यू क्रिएट करते हैं, उससे हमारी प्रोसेस का स्टेटस एट एनी इंस्टेंट कौन सा चल रहा है, कौन सा इक्विपमेंट ऑन है, ऑफ है, टैंक कितनी % फिल हुआ है, और रोटेट व्हील कन्वेयर रोटेट हो रहा है कि नहीं, सभी चीजें इजी मैनर में समझ आ सकती है. Okay, that is the basics about SCADA. Okay, after that क्या है, जो मैंने डेफिनेशन बताई थी वो, इट वर्क लाइक सुपरवाइजर हु सुपरवाइज एंटायर प्लांट एरिया. मतलब क्या है, इट इज वर्क लाइक सुपरवाइजर, हमारे प्लांट को क्या कर सकता है, सुपरवाइज करता है. ओके, आफ्टर दैट इट आल्सो कंट्रोल द प्रोसेस एज वेल एज इट्स कन्वर्टर. मतलब क्या है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर है वो क्या करता है, प्रोसेस को कंट्रोल भी कर सकता है और आल्सो डेटा को कन्वर्ट भी कर सकता है. ओके, सो यूजिंग दैट स्काडा डिस्टेंस प्लेस इफ यू वांट टू रन द प्रोसेस. मतलब क्या है, मैं रिमोट लोकेशन पे प्रेजेंट हूँ और उस लोकेशन से मुझे प्रोसेस को स्टार्ट करना है, स्टॉप करना है, कौन सा भी का ऑल है उसको ओपन करना है और क्लोज करना है. सो डू एनी टाइप ऑफ एक्शंस वी कैन डू दैट थिंग्स यूजिंग स्काडा. ओके, दैट इज अ स्काडा. So where is the most important use of SCADA? Okay, एक क्वेश्चन भी जाता है कि SCADA का मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज कहाँ पे है. ओके, सो इन इंडस्ट्रीज वेयर वी कांट सेंड पर्सन रेगुलरली. मतलब ऐसे कौन सी इंडस्ट्री, ऐसे बहुत सारी इंडस्ट्रीज है वहां पे हम रेगुलरली पर्सन को सेंड नहीं कर सकते. लाइक सपोज ऑयल रिफाइनरीज है. ओके, सपोज ऑयल रिफाइनरीज है. सो व्हाट इज ऑयल रिफाइनरी? ऑयल रिफाइनरी क्या होता है, ऑयल रिफाइनरी मतलब जो कुछ भी सिस्टम है ऑयल का फंक्शंस होता है. ठीक है, सो ऑयल रिफाइनरी इट इज अ हजार्डस सिस्टम. ओके, आल्सो ऑयल रिफाइनरी होने के बाद नेक्स्ट पार्ट्स क्या है, लाइक सपोज न्यूक्लियर पावर प्लांट. ओके, सो न्यूक्लियर पावर प्लांट क्या है, सो इट इज एन आल्सो हजार्डस सिस्टम. ओके, सो ये बेसिक ऑपरेशंस हो गए. अदरवाइज एनीथिंग दैट आवर प्लांट इज प्रेजेंस एट hazardous area in hygienic places, hilly areas and seabirds. Like suppose समुद्रामध्ये प्लांट आहे, त्या प्लांट मध्ये मला काय करायचं, ऑपरेशन्स कंट्रोल्स करायचे. सो स्काडा नसेल तर आपल्या इट इज पॉसिबल टू गो इन सी रेग्युलरली डे बाय डे. सकाळी उठलो, गेलो समुद्रामध्ये, काम केलं, संध्याकाळी पाठीमाग आलो. इट इज पॉसिबल, रोजच्या रोज जाऊ शकतो का, नाही. सो ऍट दॅट सिच्युएशन स्काडा प्लेज मोस्ट इम्पॉर्टंट रोल. सो इन दॅट आपण काय करू शकतो, आपण त्याच्यामध्ये जाऊ शकतो. युजिंग दॅट काय करू शकतो, आपण आपल्या प्रोसेसला एकदा अॅनिमेट केलं आणि आपण मी नॉर्मली बाहेर आलो तर त्या नॉर्मली बाहेर येऊन मी काय करू शकतो, माझ्या सिस्टीमला काय करू शकतो, कंट्रोल करू शकतो. ओके, इट इज क्लियर. सो नेक्स्ट पार्ट दैट इज व्हाट वी डू इन स्काडा. स्काडा में हम क्या करने वाले हैं. ओके, तो एक इन्वेंटर वगैरह के ऑप्शन है स्काडा का, इन्वेंटर वगैरह, तो आप उसका जो आंसर है इन्वेंटर वगैरह कौन है, तो आप स्काडा में मतलब आप इंटरनेट में भी जा देख सकते हो स्काडा किसने डेवलप किया. ठीक है, अभी हम जो कुछ भी देखने वाले वो प्रैक्टिकल सेशन देख रहे हैं, इसलिए मैं अभी नहीं बता रहा हूँ. आपको चाहिए तो मैं आंसर बताऊँ, लेकिन आप खुद ही देखो इन्वेंटर स्काडा का कौन है. तो हम क्या देखने वाले स्काडा में, एक्चुअली हम क्या करने वाले, पिक्चोरियल व्यू और एनिमेशन करने वाले. ओके, सो हाउ वी डू दैट एनिमेशन.
Okay, and for that doing that animations we require which things, हाँ, and which features we include to that animation. हमें कौन से अलग अलग से animations देखने वाले. ओके, तो इनमें से कौन से देखो. फर्स्ट विद द डायनामिक प्रोसेस ग्राफिक्स, ये फर्स्ट फीचर है स्काडा में जो हम करने वाले हैं. तो उसमें हम क्या करेंगे, देखो उसमें हम स्काडा का एक सॉफ्टवेयर लेंगे. उस सॉफ्टवेयर में क्या होंगे, हर एक कंपोनेंट हो गया अवेलेबल, दैट इज यूज्ड फॉर द इंडस्ट्री को यूज करने के लिए अलग अलग से कंपोनेंट उसमें अवेलेबल हो गए. सही है. तो उस कंपोनेंट को एनिमेट कैसे करना है, मतलब एक्चुअली उसको ऑपरेट कैसे करना है. तो उसको ऑपरेट करने के लिए जो कुछ भी ऑलरेडी अवेलेबल कंपोनेंट हो गया वो क्या हो गया, स्टैटिक हो गया. लेकिन मुझे क्या करना है, उसको वेरी करना है एज पर आवर कंडीशन. तो उसको वेरीज करने के लिए हम जो चीज यूज करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, डायनामिक प्रोसेस ग्राफिक्स. उसको उसमें हम क्या सीखने वाले, बेसिक प्रॉपर्टी. मतलब एक टैंक है तो उस टैंक को फिल कैसे करना है, उस टैंक को एम्प्टी कैसे करना है. एक व्हील है उसको रोटेट कैसे करना है, कन्वेयर कैसे तैयार करना है. तो हर एक चीज है, डोर कैसे क्रिएट करना है, सभी चीजें किसमें देखेंगे, डायनामिक प्रोसेस ग्राफिक्स में सीखेंगे. ओके, आफ्टर दैट नेक्स्ट पार्ट इज दैट रियल टाइम एंड हिस्टोरिकल ट्रेंड. So what is a real time and historical trend? So what is my trend? Trending is a facility in which do or in which the components which change its value with respect to time. Okay, means what? So in trend में हम क्या करेंगे, कौन सी भी कंपोनेंट उसकी वैल्यू चेंज हो रही है, ठीक है. सो उस कंपोनेंट का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यूज करेंगे. ओके, तो क्या यूज करेंगे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम उसमें करने वाले. कौन सी भी हमारी जो भी प्रोसेस है, जो सॉफ्टवेयर हमने सीखने वाले, ठीक है. तो हर एक पीएलसी है, जैसे पीएलसी का अलग अलग से ब्रांड है, उसी तरह पीएलसी के अलग अलग से ब्रांड है, उसी तरह स्काडा के भी अलग अलग से ब्रांड है. ओके, लाइक सपोज एलन ब्रैडली एक कंपनी है, लाइक सीमेंस एक कंपनी है, मित्सुबिशी एक कंपनी है, डेल्टा एक कंपनी है. तो हर एक कंपनी का अलग अलग से स्काडा है. ओके, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एलन ब्रैडली का पीएलसी सीखेंगे तो एलन ब्रैडली का ही स्काडा सीखना पड़ेगा, नहीं तो मैं कनेक्ट नहीं कर सकता हूँ. सही है. सीमेंस का सीखेंगे तो सीमेंस का, मतलब मैंने जब एलन ब्रैडली का आरएस यूज स्काडा सीख लिया मैंने, तो मैं सिर्फ वो किसको किसके साथ कनेक्ट कर सकता हूँ, एलन ब्रैडली के पीएलसी के साथ ही कनेक्ट कर सकता हूँ. ठीक है, और वो पेड वर्जन होगा. सीमेंस का सीखा तो विनसीसी सीखना पड़ेगा, वो सिर्फ सीमेंस के पीएलसी के साथ ही कनेक्ट करना पड़ेगा. ओके, बट इन आवर सेशंस, आज के सेशन में हम एक ऐसा स्काडा सीखने वाले हैं जो एलन ब्रैडली के पीएलसी को भी कनेक्ट कर सकते हैं, सीमेंस के पीएलसी को कनेक्ट कर सकते हैं, मित्सुबिशी के पीएलसी को भी कनेक्ट कर सकते हैं, और डेल्टा के पीएलसी को भी कनेक्ट कर सकते हैं. ओके, हर एक पीएलसी को कनेक्ट कर सकते हैं. एंड ड्यू टू दैट थिंग्स उस स्काडा को हम यूनिवर्सल स्काडा कहते हैं. तो उसका नाम है इनटच. इट इज फ्रॉम वंडरवेयर कंपनी एंड नेम ऑफ स्काडा इज इनटच. काय नाव आहे, वंडरवेयर इनटच. ओके, स्काडा हम कौन सा सीखने वाले हैं आज, वंडरवेयर कंपनीचा इनटच स्काडा शिकतो आपण. ओके, विच स्काडा इज डू इन आवर सेशन, दैट इज इनटच. ओके, सो इनटच स्काडा व्हाई वी सीखने वाले, व्हाई, बिकॉज इनटच स्काडा इज कनेक्टेड टू द ऑल टाइप्स ऑफ पीएलसी अवेलेबल इन मार्केट. ओके, सभी पीएलसी को हम इंटच का स्काडा क्या सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं. ओके, दैट्स व्हाई वी स्टडीज अबाउट इंटच स्काडा. ओके, सो एक क्वेश्चन पूछा था कि पेड वर्जन या फ्री वर्जन है. फॉर द एजुकेशनल पर्पज वी अवेलेबल डेमो पर्पज स्काडा, दैट इज वंडरवेयर इंटच, और सिर्फ हमें 120 मिनट के लिए एक्टिव रह सकता है. बट इफ यू वांट टू डू द इंडस्ट्रियल टेक्निक और इंडस्ट्रियल automation, for that purpose we have to purchase the SCADA packages. In market there are different SCADA packages like DRN package, RN package. So what is the DRN package? The SCADA available in different packages. First one is the DRN package and next one is the RN package. So what is the DRN package? DRN means development runtime plus networking. Okay, तो ऐसा एक स्काडा का पैकेज है, इसमें आपको प्रोजेक्ट को डेवलप भी कर सकते हैं, प्रोजेक्ट को रन भी कर सकते हैं, और उसको हम शेयर भी कर सकते हैं हर एक विंडो के साथ. ओके, दैट इज ऑफ डीआरएन टाइप पैकेज. वो मोस्टली जो कोर ऑटोमेशन की इंडस्ट्री होती है उसमें यूज करते हैं. ओके, और उसकी प्राइस बहुत ज्यादा होती है. ओके, आफ्टर दैट नेक्स्ट गोइंग टू द आरएन टाइप पैकेजेस, जो जनरल टाइप की सिस्टम और जनरल टाइप की कंपनीज है, वहां पे उनकी प्रोसेस क्या है, एक आइडेंटिकल प्रोसेस है, वो प्रोसेस चेंज नहीं होने वाली, सेम प्रोसेस है, और उस प्रोसेस का मुझे स्काडा चाहिए तो क्या करते हैं, कोर ऑटोमेशन कंपनी से एक हमारे प्रोसेस का क्या करते हैं, स्काडा डेवलप करके लेते हैं, और उस कोर ऑटोमेशन सिस्टम क्या करते हैं, उसको स्काडा डेवलप करके देती है, और उसमें सिर्फ रन होने की एबिलिटी होती है उस प्रोसेस में. इफ यू वांट टू डू एनी चेंजेस इन दैट एनिमेशंस, वी आर नॉट एबल टू डू दैट चेंजेस. व्हाई? बिकॉज दैट इज अ आरएन टाइप पैकेज, बिकॉज वो क्या सिर्फ रन होने वाला पैकेज है, उसमें डेवलपमेंट कर नहीं सकते. ओके, दैट इज आरएन टाइप. सो इसमें से मोस्ट कॉस्टली है वो डीआरएन टाइप का पैकेज. उसके बाद
कम कॉस्टली हो, दैट इज आर एन टाइप हो। आप पे डिपेंड है आपसे कौन सी इंडस्ट्री और आपको कौन सा स्काडा लेना है, डीआरएन टाइप का लेना है या आरएन टाइप का लेना है। ओके, दैट इज अ बोथ, दैट इज अ टू टाइप्स ऑफ स्काडा, डीआरएन टाइप एंड आरएन टाइप। इट इज क्लियर? So after that we going to the PPT again, just wait. Okay, that is the next part is a real time and historical trend. In real time and historical trend, what we do in this system, we plot the graph or our plant and process. हमारी जो भी प्रोसेस है उस प्रोसेस का हम क्या कर रहे हैं, ग्राफ कर रहे हैं, ग्राफ क्या कर रहे हैं, ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं। ओके, दैट इज अ रियल टाइम एंड हिस्टोरिकल ट्रेंड। ओके, आफ्टर दैट नेक्स्ट वन इज दैट अलार्म। सो व्हाट इज अलार्म, व्हाई वी यूज अलार्म? यस यस सिद्धि, सिम्युलेटर की जरूरत, सिद्धि ने क्वेश्चन पूछा, सिम्युलेटर, सिम्युलेटर की जरूरत नहीं, मैं आपको एक लिंक भेजूंगा ऑल टू ऑल स्टूडेंट्स इन ग्रुप, आवर ग्रुप। मैं उस वहां पे एक लिंक भेजूंगा, उस लिंक्स पे जाके आप क्या कर सकते हैं, स्काडा का डेमो पर्पज का सॉफ्टवेयर हो डाउनलोड कर सकते हो, एंड यूजिंग दैट डाउनलोडिंग यू कैन डू द एनी टाइप्स ऑफ एनिमेशंस which is doing in a today's session. Okay, it is clear? It is clear? I'm sending you the link of the software. Okay, so in alarm, so why we use alarm? So alarm gives you informations about how situation or how our plans is गोइंग, मतलब प्लान में जो कुछ भी चल रहा है उसकी इंफॉर्मेशन हम अलार्म के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, सो इन अलार्म वी कैन जनरेट द अलार्म्स इन द प्लान। सो बाय डूइंग दैट अलार्म जनरेशंस वी knows about information about the which type of information our system is going to the critical conditions or the normal condition. So for that purpose we have to generate the alarms, and that part is covered in alarm. Okay, in recipe manager, what is a recipe manager? Suppose we have identical process in a 2 or 3 parts. एक्चुअली स्काडा का सॉफ्टवेयर है वो सिर्फ विंडोज के लिए काम करता है, इट इज ऑपरेट ओनली ऑन विंडोज। ओके, सब देखो रेसिपी मैनेजर में क्या है, वी हैव अ सेम आइडेंटिकल प्रोसेस, बट उस दोनों प्रोसेस के लिए हमें क्या चाहिए, अलग अलग से कंपोनेंट चाहिए। तो उस वक्त हमें क्या करना है, रेसिपी मैनेज करना पड़ता है, उससे वो जो हम क्या कर सकते हैं, हमारी दोनों प्रोसेस को इजीली कंट्रोल कर सके। ठीक है, तो इसके लिए हम रेसिपी मैनेजर का फीचर यूज करते हैं। सिक्योरिटी मतलब क्या है, जो कुछ भी मैंने प्लान बनाया है वो प्लान मेरा व्हाट, वो प्लान क्या है, वो प्लान क्या है, तो उसको मुझे सिर्फ मैं ही यूज करना चाहता हूँ, मतलब मैं छोड़ के कोई भी उसको यूज नहीं करने वाला है, तो उसके लिए मैं एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता हूँ। तो उस फैसिलिटी से क्या होगा, अनऑथराइज्ड पर्सन उसको यूज नहीं कर सकते, उसको हम क्या कहते हैं, सिक्योरिटी। ओके, आफ्टर दैट डिवाइस कनेक्टिविटी फीचर्स, we studies about the how we connect the PLC and SCADA. Okay, so that is doing in the device connectivity facility. After that scripting, what is the scripting? In scripting we knows about how we do our system automatically. उसके बाद डेटाबेस कनेक्टिविटी, डेटाबेस कनेक्टिविटी में क्या है, हमारी जो भी प्रोसेस है उस प्रोसेस का क्या करना है, मुझे ग्राफ निकालना है, तो ग्राफ कैसे निकालते हैं, वो क्या करेंगे, डेटाबेस में करेंगे। ओके, दैट ऑल पार्ट्स इज कवर्ड इन टुडे सेशन। ओके, okay, that all parts is covered in today's session. So now we are going towards the actual part of our session. So anyone have a doubt? Just wait. Okay, now we are going towards the SCADA। जो कौन सा SCADA सीखने वाले हैं हम,
which SCADA we study in our session? Please give reply. In today's session, which SCADA we study? Yes, yes. Next one is one question is the most important question is that what is the difference between HMI and SCADA? So HMI और SCADA एक दोनों सेम चीजें हैं. So इसमें बेसिक चीजें क्या है? SCADA ऑटोमेशन में दो टाइप्स के ऑटोमेशंस कहते हैं. हमेशा ऑटोमेशन में दो टाइप्स के ऑटोमेशन होते हैं. फर्स्ट वन इज अ मशीन ऑटोमेशन एंड नेक्स्ट वन इज अ प्रोसेस ऑटोमेशन. ओके, सो फ्रॉम दैट फॉर मशीन ऑटोमेशन वी यूज HMI. तो HMI से हम क्या करते हैं? रिमोट लोकेशन से हमारे प्रोसेस को ऑपरेट नहीं कर सकते. HMI क्या है? उसमें क्या है? मशीन ऑटोमेशन. HMI क्या होता है? एक स्क्रीन टच डिवाइस है. स्क्रीन टच डिवाइस से क्या करते हैं? उसके लिए भी हम एनिमेशंस करते हैं और उस एनिमेशंस को हम क्या करते हैं पता है आपको? सो बघा अजून एकदा सांगतो. HMI हे स्क्रीन टच डिवाइस आहे आणि त्या स्क्रीन टच डिवाइस वरती आपण काय करतो? एनिमेशन क्रिएट करतो आणि युजिंग दॅट स्क्रीन टच डिवाइस वी ऑपरेट आवर मशीन्स फ्रॉम दॅट स्क्रीन टच डिवाइस. बट इन HMI वी आर नॉट एबल टू डू दैट ऑपरेशन फ्रॉम द रिमोट लोकेशन. मतलब हम रिमोट लोकेशन से वो कंट्रोल नहीं कर सकते. ओके, सो in SCADA we can control our process from remote location. and HMI क्या है? हार्डवेयर है. But SCADA is not hardware, it is a software, completely software. And HMI is a combination of hardware and software. So that is the difference. Clear हो गया? HMI और SCADA का difference क्या है? जुबिन, what is it? SCADA एक software है और HMI एक hardware है. So after that, in SCADA, from number of PLC brands, we are using number of SCADA. But in today's sessions, we learn about which SCADA, that is the InTouch SCADA. And why we goes towards the InTouch SCADA? हम InTouch SCADA क्यों सीखने वाले हैं? Cause InTouch SCADA क्यों सीखने वाले हैं हम? Because this SCADA is able to connect any types of or any brands of PLC in the market. Okay, that's why we learn about InTouch SCADA. It is clear? So now, without wasting time, we are going toward the practical sessions. So now I'm going to share my screen and open the software. So I think my screen is visible to all of you. Visible? Okay, okay. Now on desktop you see InTouch symbol. Here InTouch symbol is present. Okay, so I'm going to the InTouch and just remind this process. Double click on InTouch. After going to the InTouch, we are going to the first step or first window, that is the application manager window. You see here that in InTouch we always work on three windows. First one is the application manager window, second one is a Windows maker, and last one is a Windows viewer. Okay, so from that first window, application manager, in this window we just do और we just create a new application. इसमें हम क्या करेंगे? नवी न्यू एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे और उसको क्या करेंगे? उसको सेव करने के लिए पाथ देंगे. Okay, that is the first thing. In InTouch application manager window, we only create a new application and give a path to the storage. Okay, after that next window, in window maker we develop our project. मतलब जो कुछ भी एनिमेशंस करना है वो एनिमेशन हम हमेशा कहाँ पे करेंगे? That animations is do in which thing? That is a Windows maker. Okay, and after that in Windows maker I am doing the animation and I want to run that animations. For that purpose I want to go in the next window, that is a Windows viewer.
that gives proper outputs of our animation. जो आपके एनिमेशन का आउटपुट देगा उसको हम क्या करेंगे, विंडोज व्यूअर कहेंगे. ओके, तो इन 3 विंडो में काम करना है, उसमें से मैं पहले विंडो पे काम कर रहा हूँ. देखो, आई एम गोइंग टू द फाइल, टेक न्यू फाइल. Now here shows the path. You set as a default path, otherwise you can browse from here and select any types of any paths from here, but I want to go with a default path, so click on OK. I'm using the default path, then click on next. After that, in that path I want to create one folder like state level workshop. You can give any name here. Okay, after that I'm going to the next. यहाँ पे मैंने स्टेट लेवल वर्कशॉप ऐसे क्रिएट किया है. आफ्टर दैट इन नेक्स्ट वी वांट टू क्रिएट एनी टाइप्स ऑफ एप्लीकेशंस दैट इज अ स्टेट. मैं स्टेट नाम का एक एप्लीकेशन क्रिएट कर रहा हूँ और उसको फिनिश कर रहा हूँ. सो यू सी हियर दैट योर स्टेट एप्लीकेशन इज एनेबल. ओके, आपको सभी को स्टेट नाम का एप्लीकेशन ओपन हुआ दिखेगा. ठीक है, आफ्टर दैट we to open that state application we have to double click on that. After double clicking, click on OK, ignore. So now our application is ready to use and it's going to open. Okay, so you can see that our application is open. So in application we have to do any types of program. So do that the program or animation. Firstly we go to the files and take new window. In new window you give any types of name. I'm giving the basic name, and after that I choose the color to the window, that is a yellow color. After that I'm click on OK. So you clearly seen that your basic name window is opened and this window color is yellow. Okay, so in window I want to do one project. In that project I want to do that program that I have a one switch and one lamp. When switch is on, at that time lamp is on. तो मुझे क्या करना है, स्विच ऑन करने के बाद लैंप ऑन करना है और स्विच ऑफ करने के बाद लैंप का ऑफ करना है. तो उसके लिए क्या करते हैं, हमें एक स्विच और लैंप चाहिए. सो फॉर गेटिंग दैट स्विच एंड लैंप we going to the most important part of in the SCADA, that is the wizards. So what is the wizards? So wizards is a symbol in which number of components is available which is used for the animation. एनिमेशंस के लिए कौन से कंपोनेंट यूज करने वाले हैं वो हमेशा एक सिंबल के अंडर अवेलेबल होते हैं, उसको हम विजार्ड्स कहते हैं. तो हम विजार्ड्स में जाएंगे. विजार्ड्स में जाने के बाद यहाँ पे आपको नंबर ऑफ पार्ट्स दिख रहे हैं. आपको इसमें से क्या चाहिए, स्विच चाहिए. सो आई एम गोइंग टुवर्ड द स्विच. देन इन स्विच वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्विच. फ्रॉम दैट स्विच यू कैन टेक एनी वन स्विचेस लाइक फिक्सचर स्विच, रॉकेट स्विच. आई एम गोइंग टुवर्ड द फिक्सचर स्विच. Take in and place it on screen. Okay, after that again I want to lamp. So for that purpose again I want to go in wizards, take one light, and after that you see number of light is here. From that you can select any type of light. So I'm taking a tube light and place it on screen. Okay, it's very easiest part and very easiest steps to do follow. Okay, so after that I want to give the name to that switch. So to giving the name of that switch we double click on that switch and give name as a tag name. तो इसके लिए हम टैग नेम देते हैं. तो इसके लिए मैंने SW क्लिक किया. SW क्लिक करने के बाद एंटर करते हैं. एंटर करने के बाद हमको डिफाइन करते हैं, मतलब व्हाट द सिस्टम हमें पूछती है कि SW आपने नाम दिया है, उसका फंक्शंस क्या है. उसका फंक्शंस क्या है, उसका फंक्शन ऐसा है जो हमें डिफाइन करना पड़ेगा. उसका फंक्शन ऑन ऑफ है, अदरवाइज एनालॉग टाइप का है. तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उस पर क्लिक करेंगे. तो स्विच हमेशा हमारा डिस्क्रीट होता है, इसके लिए उसका टाइप डिस्क्रीट ही रहेगा. इसको हम पीएलसी के साथ कनेक्ट नहीं कर रहे हैं तो सिर्फ उसका मेमोरी रहेगा. व्हेन वी कनेक्ट दैट स्विच विद द पीएलसी एट दैट टाइम आवर स्विच टाइप इज आईओ डिस्क्रीट. बट अभी हम कनेक्ट नहीं कर रहे हैं तो सिर्फ डिस्क्रीट रहेगा. इस यहाँ पे टाइप पे लिखकर हम यहाँ से कहाँ पे भी चेंज कर सकते हैं. ओके, लेकिन मुझे अभी मेमोरी डिस्क्रीट चाहिए तो मैं ओके रखता हूँ. आफ्टर दैट आई एम क्लिक ऑन सेव एंड क्लिक ऑन क्लोज. At that time switch is becomes turn on. Okay, after that I want to turn on this light also. So turn on this light, double click on lights. You can choose the color of light when light is off and on. When light is off your color is black, and when light is on your color is red. And in expression you have to write that when this light becomes on.
Okay, so in this project, when we want to turn on this light, when switch is turned on, and when we want to turn off this light, when switch is off. So मतलब क्या, ये लाइट जो है हमेशा किसको फॉलो कर रहा है? दैट लाइट इज फॉलो ऑलवेज टू द स्विच. सो ड्यू टू दैट थिंग्स, जो कुछ भी मैंने नाम स्विच को दिया है वही सेम नाम मुझे एक्सप्रेशन में लिखना पड़ेगा, दैट इज एस डब्ल्यू. ओके, व्हाई वी यूज एस डब्ल्यू हियर? बिकॉज द लाइट ऑलवेज फॉलो टू द स्विच. That's why we given name of the switch to the light in expression. Okay, it is clear. After that, click on OK. Okay, after that we are going towards the I want to run the project. I want to run this project. So for running this project, to running this project, go to the runtime option, click on OK, ignore. So now you see here demo mode hai ye, so okay karo. After that you see here that when switch is off, light is off, and when switch is on, light is on. That is a basic animation. Okay, that is the basic part. It is clear. Switch on, switch off, light off. Okay, after that I want to do opposite operations. So what is mean opposite operations? So when switch is so what is the operation? I want to do the opposite operations. What is mean that? स्विच ऑफ करने के बाद लाइट को ऑन करना है और ऑन के बाद ऑफ करना है. सो मैं क्या करूंगा, अभी देखो डबल क्लिक करता हूं और स्विच का अपोजिट करना है, इसलिए हम क्या करेंगे, एस डब्ल्यू के आगे सिर्फ नॉट लिखेंगे, नॉट एस डब्ल्यू. देन क्लिक ऑन ओके. After that you see the result that when switch is off, the light becomes on, and when switch is on, light becomes off. That is exactly opposite operation. That is a NOT gate. देखो, when switch is on, light becomes off, and when switch is off, light becomes on. That is the opposite, like AND gate, NOT gate operations. It is yes, it is a also HMI screen पे हम दे सकते हैं, लेकिन it is a basic animations. मैं आपको अभी basic animation सिखा रहा हूँ. After that we are going towards the advanced level animation. So please wait for the next session. Why? Because आपने सीखा है, लेकिन कोई स्टूडेंट ऐसे उन्होंने कुछ भी नहीं किया है, तो उसके लिए समझना जरूरी है. That's why I'm going to the basic part. Okay, देखो, when switch is on, light is off, and when switch is off, light is on. Okay, that is a NOT gate operations. After that, we know about we have a number of logic gates in the market in our study. So if you want to do the AND gate, then for doing this AND gate, we want two switches. So for getting the two switches, I'm clicking on this switch, right click on it and duplicate this switch. Okay, that is the first switch or first input. After that I want again, then go to the right click and double click. We getting two switches as an input. Okay, after that double click on first switch, give name as A, that is the first input, and after that double click on next, that give name. Okay, that is A and B, both are inputs. Okay, and we want to see the values of A and B, that is on or off. So how to do that? For seeing the values or displaying the values, we do one procedure. For seeing the value, we go to the draw object toolbar, taking the T as a text, place it on screen, type hash on it, and I want to big size, then click on font size. In font size, you select any other fonts and take 26 font size. Okay, after that duplicate it. Okay, so double click करने का यहाँ पे. After double clicking it, I want to display the switch value. So value displays here, and switch is always of discrete type. So click on discrete and to give an expression.
मुझे ए की वैल्यू यहाँ पे देखना है तो मैं यहाँ पे ए लिखता हूँ। ऑन होने के बाद मैसेज मुझे ऑन दिखना चाहिए और ऑफ होने के बाद मुझे ऑफ मैसेज दिखना चाहिए। ओके, सो ऑन एंड ऑफ दिया मैंने, ओके किया, ओके किया। इसको सेम करना है, फिर एक्सप्रेशन में नाम क्या आएगा, बी। ओके, आफ्टर दैट फॉर एंड गेट वी गेट लाइट, गिव नेम एज अ एंड गेट। एंड गेट नाम दिया है और इसमें एंड गेट का ऑपरेशन होने के लिए वी वांट टू गिव वन एक्सप्रेशन दैट डबल क्लिक ऑन इट एंड डायरेक्टली राइट फर्स्ट इनपुट नेम दैट इज ए स्पेस operation name ending operation in space b. Okay, after that click on ok and go for the solution. So see here, when two inputs have off मतलब 0 0 कंडीशन है उस वक्त एंड गेट का आउटपुट ऑफ होता है। आफ्टर दैट फर्स्ट इनपुट इज ऑफ एंड सेकंड इनपुट इज ऑन, 0 1 आउटपुट फिर भी ऑफ है। देन सेकंड इनपुट इज ऑफ, फर्स्ट इनपुट इज ऑन, 1 0 फिर भी ऑफ है। एंड आफ्टर दैट लास्ट कंडीशन फर्स्ट ऑन एंड सेकंड वन इज ऑन आल्सो, एट द सिचुएशन आवर आउटपुट बिकम्स टर्न ऑन। ओके, दैट इज द एंड गेट ऑपरेशंस। Okay, like that you do all types of operation, like all types of gets. Okay, so after that I'm going to the directly XOR gate. So what is the expression of XOR gate? Please drop your message. What is the expression of XOR gate? What is the expression of XOR gate? Please drop your messages. So doing expression, doing the XOR gate, see here, we get a one bracket. In bracket, I'm write a bar b as a not of a and b plus means or in second bracket I'm writing a and not of b. Okay, a not a and b bracket complete और next bracket में क्या आएगा, a and not b. Okay, so I'm clicking on okay. After that we going to the run time. So when both are off or both are on, at that situation XOR gate output is off. When we have a same inputs, then output is off, and when we have a different inputs, output is on. Now see here, when A and O B both are on मतलब same inputs है, at that situation outputs off है. Also I'm doing both inputs are off, at that situation also XOR gate output is off, but when first one is off and second one is on, at that situation XOR gate output is on, and also when second one is off and first one is on, at that situation XOR gate output is on. Okay, that is all about gates concepts. Okay, that is a basic discrete types of functions available in SCADA. Okay, after that we are going towards the next part, that is the analog part animations. Okay, so data acquisition का मतलब क्या है, अभी हम पूरे आगे वाले सीखने हैं। एक्सेल में इसका डेटा कैसे मिलता है वो भी सीखने वाले हैं। So please hold the sessions. आगे का क्वेश्चन आपको जब सेशन होगा तब सभी कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन अभी तो थोड़ी देर के लिए रुक जाओ, आपको सभी पार्ट्स क्लियर करने वाले हैं। अभी हम सिर्फ बेसिक एनिमेशंस देख रहे हैं। ओके, so after that we are going towards the next part. We are going towards the next part, that is a analog part. So for doing the analog animations, मैं ऐसे ही रखता हूँ. I'm getting a new window, name as analog.
enter. Okay, so in analog window we get one slider which is present in wizard. So go to the wizard, taking one slider, that is a vertical slider. Okay, so to that slider we have to give a tag name. So double click on click and type SL, enter it. Okay, after that I want to fill the tank. So I want a tank. So from where you give tank, get tank. So for the tank you go to the wizard, then go to the symbol factory. The symbol factory, the factory at which number of components is available, which is used in industry. Okay, so click on symbol and add to the toolbar. Due to that, add to the toolbar, symbol factory symbol is available to the our tools. Okay, after that click on OK. Place here we want tank, so click on tank. You here you see number of tanks is available. From that number of tanks you get any one types of tanks for your animation. So I'm getting this tank. After the tank, after the getting the tank from symbol factory, we have to break sell that, because जो symbol factory में जो कुछ भी components हैं तो अलग अलग component use करके किए हुए होते हैं. तो उसको अभी मुझे प्रॉपर्टी देनी पड़ेगी. तो प्रॉपर्टी के लिए हम बेसिकली डबल क्लिक करके देते हैं, लेकिन डबल क्लिक करने के बाद इसको कोई प्रॉपर्टी विंडो ओपन नहीं होती. तो इसको प्रॉपर्टीज देने के लिए हमें ब्रेक सेल करना जरूरी है. तो ब्रेक सेल कैसे करते हैं, इस पर क्लिक करते हैं और यहाँ पे एक ऑप्शन है, देखो here option is that break cell option. Okay, so click on break cell. Then after that you can control the size of tank. After that double click on tank. We want to fill this tank with slider value. So for filling purpose we use percent fill property. In percent fill property we use two types of filling. This is two types of filling scenario: horizontal filling and vertical filling. Okay, so for that purpose I'm going to the first vertical filling. Vertical filling expression में क्या लिखना है, किसकी वैल्यू पे मुझे फिल करना है, स्लाइडर की वैल्यू पे फिल करना है. सो आई एम give a slider tag name value. So what is the slider tag name value? That is SL. So in expression I'm write SL. So in left side you see the value and also right side you choose the value. So in this property window, left side value is always slider value. Okay, and right side value is always tank, a object value. Okay, so what is scenario that when value at minimum bin, मतलब जब slider की value जब 0 होगी, at that situations we want a tank as a 0% fill. And after that when value of slider becomes 100, at that part we want a tank as a 100% fill. Okay, so due to that animation we click on OK, and after that OK and go to the runtime. So you can see that when slider value is 0, the tanks become 0, and we increasing the slider value, the tanks become going to the fill. Tank भी fill हो रहा है. So that is about basic filling property. When slider value is from 0 to 100, our tank is going to the 0 to 100 fill. Okay, after that I want only 0 to 50% filling tank when slider value is going to 0 to 100. For that purpose we have to change in property. To changing this property, double click on the tank, go to the vertical property, and when value of slider is 0, the tanks become 0, and when value of slider becomes 100, at that time tank value becomes only 50%. Okay, so click on OK, click on OK. 50, enter OK. After that you see the animations that when value of slider is 0, tank is empty, and when value of slider is incremented, tanks becomes fill, and when value of slider is 100, at that time tank only 50% is fill. Okay, that is a filling property. Okay, after that, that is up direction filling. If you want to down direction filling, then double click on it, vertical, only select the direction of the tank. Okay, see result here. When value of slider is 0 and tank is filling from the upward to the downward, that is the opposite property.
Also, like that same, you can see the horizontal property. Okay, that is a filling property. Okay, so it is clear what is about filling property. Filling property के बारे में समझ में आ गया? इसमें कोई दिक्कत है क्या आपको? Anyone have दिक्कत? Anyone have doubts regarding the filling property? Anyone have a doubt regarding filling property, sir? Ladder diagram which is used in PLC, can we use? No. We don't want a ladder diagram. In today's session, at the end part, I'm giving you a connection. I'm seeing you the connection of the PLC and SCADA, how to do that connections. So for now time, talking about the filling property of SCADA. So are you clear about how to fill the tanks? After that filling property, we are going towards the next property, that is a movement property. Matlab, suppose in wizard, go to the symbol factory. In symbol factory, I'm already added to the my toolbar, so I'm directly going to the symbol factory. Take it on screen, and I want one bottle. So bottle is available in container. So I'm getting one container. So my bottle is present here. I'm deleting this. My bottle is present here, and I want to do property for that bottle. We have to break cell this. After break cell this, I want to move that bottle from this location to this locations. So firstly, we have to calculate the locations. So for calculating the location, I'm getting one line and draw it on screen. Okay, so I want to move that bottle from here to the here. So distance between both of them is that line width, that is a 610. Okay, so we want to move that bottle from left to right with 610 distance. Okay, so giving that property, double click on bottle, go to the locations. For doing this, changing this location, we are change the horizontal location. So for that purpose, we go towards the horizontal location property. After going to the horizontal location property in expression, write slider tag name. I'm getting your slider tag name, that is a SL. After that, in left end, जब लेफ्ट में होगा तब स्लाइडर की वैल्यू 0 होगी, जब राइट में हो जाएगा तब स्लाइडर की वैल्यू 100 होगी. जहां से स्टार्ट कर रहा है लेफ्ट से, इसके लिए उधर 0 ले लिया. राइट में कब जाएगा और कितने डिस्टेंस जाएगा? दैट इज अ 610 डिस्टेंस जाएगा. ओके, मतलब जब स्लाइडर की वैल्यू 0 होगी तब ये 0 से स्टार्ट करेगा. तो स्लाइडर की वैल्यू जब 100 होने वाली है तब वो 610 डिस्टेंस क्रॉस करेगा. Okay, so click on OK, go to the OK. After that, run this program. When slider value is 0, it is the object is present at left position, and when moves the slider, then your tank goes towards the right side. That is a horizontal location change property. I want to change the object from here to the here. So for that purpose, I'm getting a duplicate object, place it here, double click on here. I want to change the location of this object from right to left. To changing this location, double click on it, go to the horizontal. At right end, value of slider is 0. At left end, value of slider is 100. And start it's from right. So here is 0, and go to the left with the 610 distance. So click on OK. Okay. So you see here, at the same time, both bottles is coming from left to right and right to left. Okay, that is a horizontal location property. After this horizontal location property, we turn towards the vertical location property. The bottle is already present here. I want to move this bottle from here to the here. So firstly, we have to calculate the distance. For calculate distance, draw a line. The value of this line is a 390. So we want to
move that bottle vertically with 390 distance. So double click on it, go to the vertical property, give expression as a slider tag name. When bottle is stopped, slider value becomes 0. And bottle going to the bottom, then slider value becomes 100. Okay, and start is up, that's why they're 0. And going with the 390 or how many distance? Line distance, I think 310. That's why I'm giving here 310. So click here, go to the runtime, the bottle moving. Okay, vertically. Over 390 distance now. Okay, after that same things is do from downward to the upward. For that purpose, double click on it, going to vertical property, click 0 here, upper 390, bottom 0, and when top slider value is 100. Only opposite the values. So you can see both bottles is comes from left to right, top to bottom and bottom to top. That is the location property, horizontal location and vertical location property. Okay. After that, we going towards the next property, that is the orientation property. So for orientation, why orientation property is used? To rotate the object. ऑब्जेक्ट को रोटेट करने के लिए हम कौन सी प्रॉपर्टी यूज करते हैं? ओरिएंटेशन. सो फॉर रोटेटिंग प्रॉपर्टी और ओरिएंटेशन प्रॉपर्टी, वी गोज टुवर्ड्स द सिंबल फैक्ट्री, टेक वन वेहिकल, गो टू द वेहिकल एंड टेक वन व्हील. तो मैंने एक व्हील ले लिया, इसको रोटेट करना है. हम इसको क्लॉकवाइज भी रोटेट कर सकते हैं और एंटी क्लॉकवाइज भी रोटेट कर सकते हैं. सो हाउ वी डू दैट क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज रोटेशंस? सो फर्स्टली ब्रेक सेल ऑन इट, ब्रेक सेल इट. After that, clicking on, double click on it, orient, go to the orientation, in expression give name slider. Okay, for clockwise direction, write 0 at CCW and write 100 at CW. Okay, that is for clockwise direction. And for anti-clockwise direction, write 0 at CW and write 100 at CCW. मतलब only change the values. Okay, and X and Y position both are 0. Why? Because we want to move that circle in constant positions. Okay, that's why it is a clockwise direction. So see here. Okay, and also I'm doing the anti-clockwise direction. For anti-clockwise direction, double click on it, orientation, write 0 in CW, write CCW 100, write 0 in CW rotation, and write total 360 degree in CCW rotations. Okay, after that, click on OK, click on OK, click on runtime. So this object is running in clockwise direction and this object is running in anti-clockwise direction. So see here. Okay, it's done. Okay, it's exactly doing the same thing. First one is a rotate in anti-clockwise direction. Second one is a rotate in anti-clockwise direction. Okay, so using this we can do the one conveyor that. So see here how we do conveyor. So I see here, you see animations like conveyor belt. So distance, I want to change the distance. I'm doing that distance only 550. Okay, now you see here, you see the animations like bottle is moving on the conveyor. Okay, here you see the animations like conveyor.
That is the use of basic properties: orientation property, location property, and filling property. After that, one property is there, that is changing the size of object. To changing the size of object, we take one rectangular, and I want to change the size of that rectangular with respect to the slider value. So doing that animations, double click on object, go to the object size property. In object, we can object size, you can change the object width also as object's height. So going to the object width, SL, write SL in expression. When value of slider is 0, at that percent object becomes 0% appearing, and when the value of the slider is becomes 100, that object becomes 100% of appearing. Okay, and anchor is what the starting the width from where location, left to right, otherwise right to. So I'm clicking on left, that's why our object size is increased from left to right. So in runtime you see that when object value is 0, no when slider value is 0, no object seen, and when we increase the slider value, your object is increasing side from left to right due to the left anchor. Okay, after that I want to increase the width from right to left, that's why I'm only click on width and change the anchor as a right, click on OK. Okay, then you see here when value of slider is both are disabled and value of slider is increment, both value object will be increase or side. This property is same for the height property. Suppose go to the symbol factory. Suppose we have one hook. Brexel it, and we want to see the animations of that hook, like changing its size, height. Okay, so double click on it, go to the height. When in expression write SL, when value of SL is 0, at that time object want only 20% seeing, and when value of slider is increasing, value becomes 100. मतलब जब स्लाइडर की वैल्यू 0 होगी तब ऑब्जेक्ट सिर्फ 20% दिखेगा, और वैल्यू जब स्लाइडर की जब 100 हो जाएगी तब वो ऑब्जेक्ट 100% दिखेगा. Okay, so click on OK, click on OK, go to the runtime. So I want to change this anchor of this object also. Double click, go to the height, and I want the top anchor. So go to the runtime window. Now you can see our now in first situation your object only enable with 20%, and when we increase the slider value, your angle becomes goes upward. So I want to do one animation that this bottle is going up with the that angle. So for that purpose, bottles gives a hanger gives property when value of slider is 0, at that percent 100% दिखना चाहिए, और जब value of slider is 100 then 50% दिखना चाहिए. तो ओके किया, इसकी टोटल साइज 460 है, और 460 के हाफ कितना होता है 230, इसलिए बॉटल को मैंने 230 से मूव करता हूँ ऊपर वर्टिकल 0 to 100 230. So at that time in runtime window you see the scenario that देखो जैसे जैसे एंगल ऊपर जा रहा है उसी तरह नीचे से बॉटल ऊपर जाएंगे उसके साथ. Okay, that is the hanger animations. Then I want to do door animations.
तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, जब स्लाइडर की वैल्यू 0 है तब ये दोनों 100% दिखेंगे। तो सिर्फ क्या करना है, विड्थ में जाना है, जब स्लाइडर की वैल्यू 0 है तब वो 100% दिखने चाहिए, स्लाइडर की वैल्यू होगी तब सिर्फ 100 होगी तब सिर्फ 10% दिखेंगे। तो क्लिक ऑन ओके। सेम प्रॉपर्टी गिवन टू द अनदर ऑब्जेक्ट, 0 ला 100%, 100 ला ओनली 10% आणि राइट एंकर. Click on OK. Okay. After that, we want the background. So I'm taking one. Then fill any types, any color in that. After that, send to the back. Okay. Now you go to the runtime window and you see animations like door opening animation. Here, lift door opening animation. Okay. Using the width property, we do the animations like door opening animation. Okay. So when windows become totally open, we want to display here something. So what we do, go to the text, place here and write welcome to state level workshop. I want to increase size. It's very big. It also very big. So we are okay with 12 size. So and double click on it, and this letter is enable when door is totally open. So double click on it, go to the visibility property and click right here when SL value is greater than equal to 99. मतलब what, जब पूरे डोर ओपन हो गए उसी वक्त ये ऑब्जेक्ट क्या दिखना चाहिए, मुझे ऑन दिखना चाहिए, इसलिए मैंने ऑन पे क्लिक किया, देन क्लिक ऑन ओके आणि go to the run time. So now you see here when we increase the slider value, door becomes open, and after that at the last instance, welcome to the state level workshops is present. Okay, that is about which property? That is a object size property. Okay, that's all the things is covered on all the basic properties covered in that sessions. So using that property, we can do any types of animations, like any types of project. So how we do that project, please see here. I'm getting the slider value as a 100 to 200. I'm deleting it. I'm doing the animation, that door opening animation firstly. Here
You can see when value of slider is 0 to 25, at that instance we want to open the door. So double click on it, go to the width. When value of slider is 0, door want 100%, and value of slider goes to the 25, door want 10. So just to change the value, double click on it. Also go to the width 0, here only 25. Okay. Also I want bottle here, and that bottle is enable after 25. So firstly send to the back all, देन इसको डबल क्लिक करके विजिबिलिटी देना पड़ेगा. एसएल की वैल्यू जब 25 के ऊपर होगी उसी वक्त ये बॉटल दिखनी चाहिए. तो मैंने इस पर यहाँ पे क्लिक प्लेस किया, बॉटल में यहाँ पे डालता हूँ. सो नाउ वी कैन सी दैट okay. We want to do one animation. One thing is that send to back. This also want to send back. Okay. After that, you see after 25 bottle becomes enable. Okay. Also after 25, this bottle want to move from here to the here. So we firstly calculate the distance of the part. Please ask any other sub questions after the sessions. After the sessions, we can conclude the general questions. So in this question, Harshvardhan, I'm clear the what is the role of power supply. So before going to that, we want to move the bottle from with 490 distance. So double click on this, click on vertical property. When value of 25 at the top and value of 50 at the bottom, at that distance we 490. It is 490 or how many? It is 490 exactly. Okay. So now we see that okay. Okay. After bottle comes here, we want to move that bottle from here to the here. So up to that point, so I'm going visibility of this property as SL is greater than 100. So when this bottle is come here, and I want to move that bottles towards this. So I want to get distance as how many distance is there? That is a 480. So I want to move that bottle horizontally with 50 to 75 with 470 distance. So now you see here, okay. Okay, that's the basic part. After that, I'm going to fill the bottle. After 70 to 100 with 100% filling. Also enable this property also here. Now you see first the door open, after that bottle is come, after that fill here, and after filling here, I want up direction filling.
So after that, I want to move that bottle in upward directions. For connect animation, I'm doing some management. Okay. After that, 570 and half of 570. इसको हाइट प्रॉपर्टी देनी है, मिनिमम हाइट 100 when 100% present, and when 125, that is 50, 125% present. After that, giving vertical property to the bottle, 100 to the 125, 0 to 285. See here, okay, bottle goes up. After that, plus the disable this bottle after 100. So right here, SL greater than and SL less than equals to 100. So double click on it, go to the runtime. Now check here. Okay. After that, we want to move that angle from here to the here. So what is the distance between both of them? Firstly, calculate them. That is a 380. So move the both part with 380. With 125 to 150. With 380 distance. Same property to the bottom. And this hook is enable. Up. After that, double click on it. Want to give visibility. I want to visible this hang after 150, and I want to disable this lamp, enable this lamp. Otherwise, I want to enable firstly and disable after 150. So how we do that? Go to the runtime. See here. Okay. After that, यहाँ पे है 550. 550 minus 285 कितने है? I think it is right. I want to visible this object after 150. So see here, it's okay or not. Okay, it's clear. After that, we giving property to this bottle, visible after 100 and disable after 150. So after that, we give height property. When value of slider is 150, then object is 50%, and value of slider is 175.
then bottle is 100%, and also giving same property to bottle with vertically up only do the opposite 150 to the 175, 0 to 185. Okay, and click on OK. So now you see the animation here. Okay. Okay, now see here, door is open, bottle is coming, the bottle is filling. After the filling, hanger or crane becomes the place this, pick this bottle. After going to the picking, place other things. After that, placing other thing, one thing is more only remaining here, that is go to the vehicle. I'm getting one truck, brake seal it, place here, rotate, so and you see here, I want to after that give horizontal property from 175 to the 200 is going with 300 distance. Both are truck and bottom. Okay, so now see here, that is the best our complete our project here. Okay, there is some issue in truck property. It's clear now. Okay, I want to move this with maximum distance with 400. So this effect is more important to us because if you are not giving this getting this basic property, you are unable to do the animation. Okay, now see here. Okay, but I want to do that project with only one click. Means I don't want to move that slider with automatic. I don't want to move it manually. I want this with switch. So for that purpose, we require to do scripting. So how we do scripting? Click here. So we all know about for the all object, we taking only one tag name, that is a slider. Okay. So I'm going to the wizards. I'm taking one switch, that is a rocker fixture switch, and when I'm turn on this switch, the value of slider is going increase up to the 200 due to that our project is become automated. So for that, doing that things, firstly double click on it, give name as SW to the switch, then click anywhere in window as a right click, go to the Windows script. After going to the Windows script, click here, right here 10, and after that right here if means jar SW equal to 1 means जब भी switch 1 होगा, after that then means तर काय होणार, किसकी वैल्यू इंक्रीमेंट करनी है, SL equal to SL plus 1. Okay, after that click on semicolon and end it. Okay, I want to do that process repeatedly. Then if jar SL value equals to 200, when SL value is become to the 200, at that situation I want SL equals to 0 means I want repeated, फिर 0 से start करेगा and end it. Validate, convert, okay, and I want to display the count. So for counting purpose, I'm go to the C or go to the wizard, taking one value display.
Go to the tag name, double click on it, write C as a count, 0, allow input, okay, enter. So in script only write one sentence here. When slider value is 200, then C value equals to C plus 1, semicolon. Okay, so after that, validate, convert, okay. Now you see our project as a automatically designed project. That is a basics property of SCADA, which is used to animate or give the effects to the objects. Okay, after that, switching on, you see our projects is become automatically run. Now zero count is here. After completing the one process of the bottle, the count is going to the increase. That is the basic properties of SCADA. And using this property, we create one thing, that is a one project. So it is clear about the project and basic property. After that, in next sessions, we goes towards the how to generate a trend, how to do the animation of SCADA with Excel sheet, and how we communicate the SCADA with PLC. So anyone have doubts regarding the basic session? It is clear how to give properties and how to do animation. हर्षवर्धन, आपका क्वेश्चंस क्या है रिलेटेड टू द पीएलसी है? रैक और चेसिस क्यों यूज करते हैं? तो रैक और चेसिस क्यों यूज करते हैं? क्योंकि हमारी जो मॉड्यूलर टाइप का पीएलसी होता है, उस पीएलसी में हम अलग अलग से कंपोनेंट यूज करते हैं। लाइक पावर सप्लाई मॉड्यूल होता है, उसमें इनपुट मॉड्यूल होता है, आउटपुट मॉड्यूल होता है, सीपीयू होता है, वो सभी अलग अलग से हम परचेस करते हैं। तो इन सभी मॉड्यूल्स को एक साथ में कनेक्ट करने के लिए एक मेटल की बॉडी मिलती है, उसको हम रैक और चेसिस कहते हैं। तो बेसिक रोल इज सिंपल दैट द रैक इज यूज्ड टू होल्ड द ऑल मॉड्यूल टुगेदर। सभी मॉड्यूल एक साथ को लेने के लिए हम क्या करते हैं? रैक और चेसिस यूज करते हैं। It is clear? Basic property, and using basic property, how we do on animation for the project. Okay. Anyone have a doubt? Any other? Okay. So now, so our first session of the technical part is cleared here. In next sessions, we join at 2 p.m. So at that point, we taking the trending features. We are taking the trending feature,
database feature, database connectivity feature, and the last one is a device. That is the most important part, device connectivity feature, in which we see about the how we connect the PLC program with the SCADA animation. Okay, so for doing that project, you have to hold the session and you have to continue the complete sessions. Okay, so please wait for 5 minutes. Our administration want to give some instruction to all students, so please wait for the 2 minutes. The administrator ma'am is given you the information regarding the next sessions. So wait. Hello, sir. Hello, students. Yes sir, yes sir. Uh, the next link for the next session will be available on WhatsApp group at 12:45 p.m. Sorry, 1:45 p.m. sir. It's okay, okay. हाँ. So any other instructions sir? नाही सर. आणि पहिल्या सेशनची सगळ्यांनी अटेंडन्स टाकलेली सर लिंकला, ती फक्त सगळ्यांनी द्या आणि बरोबर 1:45 नेक्स्ट सेशनची लिंक अवेलेबल करून देण्यात येईल. Just wait. Hello. So as per sir says that we are joining at the 2 p.m. and you are available link at the group at the 1:50 p.m. 1:55 p.m. So please join the next sessions continuously. After that you all get the certificate. Okay, thanks to all and bye bye. Sir, can we end the session? सर आता अटेंडन्स लिस्ट टाकतोय, तर सगळ्यांनी प्लीज YouTube वर अटेंडन्स द्यायला सांगा सगळ्यांना. Yes, all students please fill your attendance. After that you leave session. Attendance भरा सगळ्यांनी सेशन मध्ये. अटेंडन्स भरल्यानंतर तुम्ही लिव्ह करा. सो प्लीज ड्रॉप सर अटेंडन्स लिंक. यस सर, यस सर. Yes sir. Oh, doctor sir, doctor. Sir, can I leave session? Yes sir. Okay sir, okay sir. Okay, thank you. Students, please fill your attendance. After that you will leave your session. Thanks to all. Sir, the link 2 वाजता.